किया है तूने अपनी मेहनत कौशल से, रण विजयी होना है तुमको निश्चय और मनोबल से। युगों युगों तक आगे ही इतिहास रचाया जाएगा, हॉकी की रणभूमि पे तिरंगा ही लहराएगा। फिर गूंज उठा है शंखनाद, पाना है लक्ष्य को निर्विवाद। कभी रुकेगी नहीं, कभी बुझेगी नहीं अपनी विजय की जलती मशाल। अब कुछ भी हो कम होगा नहीं, ये हौसला नौजवानों का। हॉकी इंडिया, come on इंडिया, let's win this। फिर गूंज उठा है शंखनाद, पाना है लक्ष्य को निर्विवाद। कभी रुकेगी नहीं, कभी बुझेगी नहीं अपनी विजय की जलती मशाल। ये वादा है इस मिट्टी से, इस मिट्टी की संतानों का। अब कुछ भी हो कम होगा नहीं, ये हौसला नौजवानों का। हॉकी हॉकी जन जन के सपनों की, भारत के सम्मान की। जय जय हो, जय जय हो, जय हो हिंदुस्तान की। सीना चौड़ा किया है तूने अपनी मेहनत कौशल से, रण विजयी होना है तुमको निश्चय और मनोबल से। युगों युगों तक आगे ही इतिहास रचाया जाएगा, हॉकी की रणभूमि पे तिरंगा ही लहराएगा। फिर गूंज उठा है शंखनाद, पाना है लक्ष्य को निर्विवाद। कभी रुकेगी नहीं, कभी बुझेगी नहीं अपनी विजय की जलती मशाल। अब कुछ भी हो कम होगा नहीं, ये हौसला नौजवानों का। हॉकी इंडिया, come on इंडिया, let's win this। फिर गूंज उठा है शंखनाद, पाना है लक्ष्य को निर्विवाद। कभी रुकेगी नहीं, कभी बुझेगी नहीं अपनी विजय की जलती मशाल। ये वादा है इस मिट्टी से, इस मिट्टी की संतानों का। अब कुछ भी हो कम होगा नहीं, ये हौसला नौजवानों
चौड़ा किया है तूने अपनी मेहनत कौशल से, रण विजयी होना है तुमको निश्चय और मनोबल से। युगों युगों तक आगे ही इतिहास रचाया जाएगा। Indian hockey here in the New National Championship, all the way live from Chennai in the state of Tamil Nadu. This is your host commentator Mayur Barwa, and this match is going to be very interesting. This is Bengal who is taking against Goa. There you go. This is all wrapped in such a good afternoon here, and I'm sure it's going to be a fascinating contest as now Bengal in this match before they have played, they won 2-0 versus Hockey Arunachal. But for Goans Hockey, they lost their last encounter 0-4 versus Chhattisgarh Hockey. So lots of things riding on Team Goa for this match. So it will be very interesting how they can go up, because versus Chhattisgarh, they had definitely a very tough time. But for Bengal, they will be very, very useful, and they know how to play their brand of hockey. They've also showed and seeded very much early on in the previous contest, also, I would say previous editions. As you can see, the sun is out, and I'm sure with people also viewing it online, they'll also be very enthusiastic of the brand of hockey which is going to come up in this 15th edition of the Sub Junior Men's National Championship. Chennai, again, it's a very hot and humid city altogether in the southern India part here in Tamil Nadu. So I'm sure for the boys, they'll really have to keep on gulping the energy. I'm telling boys because they're still there in the sub junior days, as we're all almost set for the match officials to set in, and the temperatures might just fly in as both the captains go head in head for the toss, and very slowly we'll have the walk through right between the arch gate and right between when the officials will be taking up that hockey ball in them, getting ready for the last minute photo ops to be finished here. This is match number 15. This is already building up to be a very good encounter. As you see the match officials just walking in, and I'm sure very slowly will be the players also joining them. You've already had the lineups on your picture. Just to let you know of how they will be forming them. As you see the players just walking out for this match number 15. Fifteenth Sub Junior National Championship 2025. Held at Chennai. The match between Hockey Bengal versus Goa. I invite Mr. 𝐶𝐚𝐭𝐢𝐴𝐚, National Hockey Player and also the Sub-Junior Hockey Team Manager, accompanied by Mr. Job.
See a small little player coming in. It's time for national anthem. Always gives us such a patriotic feeling, isn't it? Whenever you hear the national anthem in your eardrums, as the players just put up their hands across to the opposition and the match officials get you the lineup. For Hockey Bengal, Aditya is the goalkeeper. The captain is Shubham Patra. You have Shadar Pravitra, Mondal Sayan, Bar Riju, you have Abhishek Shaw, Ravidas Shivam, Devananda Ghosh, Munna Kumar Singh. He already has a goal in the last match in the 37th minute. That was a field goal. And you have Ratan Bean and Rishabh Ray. That's the team Bengal right on your picture. And for Goans hockey, goalkeeper is Pratik Gupta, Shahid Khan, Surat Sudhir Kharsil, the captain Adil Dilshad, Nyame Adim Chube, Ansh Ankush Gaonkar, Izan Chaudhary, Jambodkar Sahil Pramod, Chetan Ramkrishna Gaonkar, Ika Ismail, and Lakshman Yelapa Wadar. The team coach for Goans hockey is Lester Gujau, and the team coach for Hockey Bengal is Bappa Saha. The umpires Haris Param Sethi and Rajiv S. At a blow of the whistle, the match is up and running here at this beautiful venue here in Chennai in Tamil Nadu. You're witnessing match number 15 of this 15th Hockey India Sub-Junior Man National Championship. Brilliant day. Day number 3. Remember, we just started day before yesterday and we will be culminating on the 8th of August 2025. Thank you for the names. It's me, Mayur Parwa. And in the next quarter, you'll be listening all in Hindi through the voice of Vikas Kumar. We have a very good panel of commentators, let me tell you. We have, all in all, our very experienced Mr. Shami Malam also will be joining there in the next match. So it's going to be some very good voices that we'll be hearing in this hockey action. And may this continue. The production has also been very spot on. Different pictures from great camera angles that you have seen in this tournament. It is very, very nice to see. So into the second minute, into the striking circle. Now Bengal, they're playing in their violet-white jersey, and in the green avatar are the boys from Goa. In the first quarter, 1.5 minutes has gone by. Bengal will be attacking from left to right, and Goa from right to left. That's how it is as Bengal marches along, trying to get a very good ball control. I'm sure just come the final stage, or when the home team will be just going on and on. I'm sure there'll be many spectators probably trying to come into the venue, trying to get a good pass right from the center line. Bengal bouncing on the opportunity, trying to get. I think the first half, that's how Bengal have started off with some attacking hockey. They know brilliant gameplay. 2-0 versus Hockey Arunachal. In the 37th minute, the field goal, as I mentioned before, it was Munna Kumar Singh, and then via a penalty corner in the 56th minute, it came from Shubham Patra. So they really have the honors of scoring very early on. But again, if you see how
Goans have lost 0-4 versus Chhattisgarh Hockey. If you see the stats which came out for Chhattisgarh Hockey, they scored the first goal in the 16th minute, then 37, then regularly almost in the 46th minute, 66th minute, at an average of 15-20 minutes. So I think they really need to press the action Goans Hockey. At the moment, they're doing very well, and this is the area where, on the left of the picture, where Goans Hockey will be scoring. Remember, Bengal right on the edge of the line, pushing its through to the sticks. It is such a nice camera angle, isn't it? It's like an eagle's eye view. As I mentioned, can the Eagles snatch one goal for the boys in green? I won't say man as of now because it's still inside the sub-junior category. And this is Division B, remember? And we also had Division C. We are yet to start off Division A of this championship. Hockey Gujarat versus Hockey Arunachal. That's when the campaign started. Hockey Bengal already trying to put the onus, just losing control, but the ball goes out of the striking circle, out of base. The scoreline still remains at 0-0 for Hockey Bengal and for Goans Hockey. Just be feeling that that's the area, but the right hand side, that's where Goans Hockey will be defending. So to put up the statistics for you, Hockey Gujarat, they won 5-1 versus Hockey Arunachal. We're talking about Division B. And then Chhattisgarh Hockey, they won 4-0 versus Goans Hockey. Now it's a Bengal Hockey inside the striking circle. Number 15 still down the prowl. He needs to go through the defense. As a call for a foul play. Penalty corner being awarded to Bengal Hockey. Less than 3.5 minutes. The goalkeeper, the players from Goa, just marching along towards the umpire, and we are going upstairs. We are going upstairs to get the video referral. Persistence from technology coming early on. So work for our TV umpire to be ready. The umpires today, Mr. Harish Pamisetti. With him is Rajiv S. Scoring judge is Malekar Dinesh. The timing judge is Ibrahim Kutti Shamir. The reserve umpire for today's match is Sajal NV, and the technical officer is Mr. Vikram D. So let's see what they can just pull up. So is this a review which is going by in the way for the boys in green for the Goans Hockey, because they are the one who have pulled in our review, still trying to get something right from above, but good attacking hockey that you have seen from Bengal early on. So they will definitely would look to continue this very early on. Let's just say how they're just going to put it across. It won't be easy especially for Goans Hockey to reach the defenses. We've already seen how almost in a tangle in a pyramid line when Bengal Hockey was going up to charge on their opposite direction. But for Goans, this might just be a crucial review, because as I mentioned before, penalty corner goal from Shubham Patra in the 56th minute. That was in the previous match versus Hockey Arunachal, and they would love to open their account in this match also with a goal. So trying to see probably the body language of the umpire. No movement at all at the moment from him, and the way he has been headed through his angle, we can definitely know that's where the TV umpire is sitting. We don't feel there is anything coming as of now, so it will really help us to go through the stats. As I mentioned before, Division B, Hockey Gujarat winning 5-1 versus Hockey Arunachal. Chhattisgarh Hockey 4-0 versus Goans Hockey. Kerala Hockey 6-0 they won versus Hockey Andhra Pradesh. Then Manipur Hockey started off brilliantly 7-1 versus Telangana Hockey.
And then Hockey Bengal 2-0 versus Hockey Arunachal. That's what I've mentioned before. And Hockey Gujarat 2-1 versus Chhattisgarh Hockey. Kerala Hockey 6-1 versus Hockey Himachal. And then Manipur Hockey again continuing their dominance 10-1 versus Hockey Andhra Pradesh. As I finish up for Division B, they lose their review because the penalty corner stays. So that's the signal. So Hockey Bengal would love to throng in and get the first goal and put the pressure on GOANS Hockey with this first goal of the day. Remember, we are just having 2 matches to be played today. This and then 3 p.m. will be happening Hockey Himachal versus Telangana Hockey. But we are all in readiness for this penalty corner to draft in and to drag flick it. We'll be seeing who's there. Insertion has been done. Sweeping it across. Well done from the goalkeeper. Absolutely wonderful. Bounce it through right to the center where the drag flick was there. Absolutely well done. Pratik Gupta was the one still inside the striking circle. A reverse tomahawk coming in very forcefully, but goes really smearing across the goalpost. The scoreline still remains 0-0. Interesting from Bengal Hockey. Reverse and went like a bullet. Absolutely like a bullet. But the way Pratik Gupta, the goalkeeper, saved it, or this might just be a start of a tussle between Bengal Hockey and versus Pratik Gupta. It did see it's not a huge one, isn't it? You have to see your hand-eye coordination, especially the eye from the corner. So interesting hockey very early on here. The referral, we have sweeping like a broom using the stick from the sub-junior boys. They have muscle it, especially Bengal Hockey. So GOANS Hockey really need to be very agile, need to be very cautious of the brand of hockey that Bengal has put in the picture. And also of the fact that the stats are against GOANS Hockey. 0-4 versus Chhattisgarh. Bengal with a 2-0 win. But again, the difference was there. They have scored the first in the 37, then the 56. The different teams will provide you different chances. And of course, you cannot let any of your chances very easily. So let us just bring on a very different angle of how the approach it to be right from the center. Drifting very along. It's 11 in there. Kovannanda Ghosh is the one. Very peacefully is going by. I think that's where GOANS Hockey might have just lost a little bit of an advantage. They're not going too close to where they're playing right in the forwards. Devananda Ghosh is the one right from the center carrying on the flame for Bengal. Sriram Patra, the captain, in the 56th minute in the previous match via a penalty corner, scored a goal. This time it's GOANS Hockey going ahead, and because of the eagle's eye view of the camera angle, you might sometimes feel it's a huge surface in the AstroTurf here in the city of Chennai. They love their brand of hockey. With huge sporting facilities, be it any sports, they will throw up. That's why it's a huge nation, this country of India, with southeast, northwest, especially from the south and the north, where it's very strong. But what about the boys from the north? Is Manipur, Mizoram? They played absolutely wonderful classical hockey, especially Manipur. 7-1 versus Telangana, 11-1, beg your pardon, 10-1 versus Hockey Andhra Pradesh. They will be a trendsetter for Division B. But if you have to look about Division C, Jammu Kashmir 4-0 versus Rajasthan Hockey. Hockey Association of Bihar won 2-1 versus Hockey Mizoram. And then Hockey Uttarakhand 27 versus 0 goals versus Tripura. 27 goals for Hockey Uttarakhand, and that will tell you that state of hockey of Uttarakhand has emerged
as one fond viewer in the map of India to have produced great champions. And then Jammu Kashmir 1-0 win again versus Leh Puducherry on the back of a win versus Rajasthan. And then Hockey Association of Bihar 19-0 versus Tripura. So very much on the back foot is Tripura, 27-0, 19-0, conceding more than 40 goals now. And then Hockey Uttarakhand again 5-1 win versus Hockey Mizoram. Hockey Bengal on the prowl from the right, left and right, almost 360-degree. It's a very good pass onto Barizu that loses control. That again, if you can see this angle has given you such a nice one. This is Bin Ratan. It's a very good assist. Oh, from the right of the goalpost. Probably it got rebounded. Shivam Ravidas was very much in the corner. There was not one but four in a zigzag manner. You can see that pass. There you go, zigzag fashion from probably number 9 from Shivam Ravidas. It went to 𝐕𝐧𝐝𝐢𝐻𝐿, but on the legs. Penalty corner again. So within 10 minutes, we have 2 penalty corners. First one was not to be, thanks to Pratik Gupta, goalkeeper, who saved a very, very huge one, which was Ruby Trong. Blow the whistle, insertion has been done, and this time it was much slower, getting rebounded from the footing of the goalkeeper, Pratik Gupta. A shy from the hockey stick from Bengal, but couldn't get it. It was just the air that has been baffled. There you go, rebounding. It was for Rishabh Ray to throng in, but still the danger is not out of contention. Keep your eyes on Ratan Bin, jersey number 17, jersey number 15, beg your pardon. He is the one from the prowl, from the right. He's been sticking into the striking circle. He is the go-to man for Hockey Bengal. So he'll only be a fool not to recognize him from a corner for GOANS Hockey. Less than 5 minutes remaining for the first quarter to end. Bengal Hockey will definitely would love to see a goal coming here. GOANS Hockey at the moment have done really, really well, mainly thanks to Pratik Gupta, the goalkeeper. See, to the center, almost getting into the striking zone, but again, revolving himself at 360-degree is from Bengal Hockey. Blow the whistle, it's a very nice scoop. Right at the center, helping like a broom along the surface. Guys on the quarter, we'll be playing 4 quarters. This is the first quarter in picture. 4 pictures coming in. What a wonderful afternoon to enjoy the game of hockey. So anyone somewhere near across the venue, why don't you come to the venue? It's a free entry. So come up, relax, probably bring a newspaper if you feel a diversion is needed during the break. But don't forget to bring a bottle of water, because it's going to be very, very hot already. The heat is catching up on GOANS Hockey, but they have done really, really well here, as I've mentioned before, to silence Hockey Bengal at the moment, to keep it 0-0. I'm sure Bengal Hockey will try to tie up the laces even more stronger. But they would like to go to the dugout with some good honors on their name. If not 2, why not just 1 goal up their name? But GOANS Hockey might be thinking a little different. Probably a little slow from the foot going into the center. Trying to put the tackles on their name. This might just get open up. Let's see what the next section just holds up into the striking zone. GOANS Hockey a little perplexed. I initially thought that was a shadow right near the striking circle, but actually it is the water from the turf, probably, which is actually trying to just settle underneath the surface. There's 2.5 minutes remaining for the first quarter to end up. I'm sure everyone who has joined in for this afternoon game
really enjoying the kind of tackles which is going on between both the sides. We're just having 2 matches. After this, we'll be having a 3 p.m. match, Hockey Himachal versus Telangana Hockey. Both the teams have won their previous encounters. Hockey Himachal winning their last match they're losing the last match 1-6 versus Kerala Hockey. Telangana Hockey also lost their last match 1-7 versus Manipur Hockey. So it's going to be a very interesting battle the next match. Oh, one of them got injured. GOANS Hockey. He's lying just near the striking circle. He has left it stick also. Not very happy pictures coming in. But that's the dugout of Hockey Bengal. Time has been paused at 1.5. It's good to see probably. Those are players for the future. They would love to, I'm sure, they'd love to put the best foot forward when they go ahead. Because we have few of them, isn't it? They know that they are going to have a very good game. I'm sure they'll be loving the contest. Into the striking zone right from the center. In the center, let's see Hockey Bengal what they do in this 1 minute. Who can just change the picture? Never know what happens. Out of bounds it goes, but not much of a connection. Probably the fusion between the stick and the ball was not easy. But 10 seconds now going by remaining. Let's see how will it go. And some clinching on their mind can change it. Sometimes those seconds also puts up a surge in the energy. I haven't seen the LED screen, but somewhere I'm sure the clock, the timer is there. Much to the benefits of the player to see. See how it goes from here on. Just less than 10 seconds now going by. Officials will also have a crucial knock to do. GOANS Hockey. Almost into the striking circle, averting the danger is Hockey Bengal, and there you go. The hooter has been blown, and that will signal the end of the first quarter. So none of them have been able to open their account. It's 0 for Hockey Bengal, 0 for the GOANS Hockey. We've seen a very, very nice hockey to have started off. Some penalty corners inside the striking circle, some have been averted. We'll be back with the second quarter very soon, and it will be my colleague in Hindi, Mr. Vikas Kumar, who will be taking over the honors. बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया मयूर। शानदार तरीके से इस समय 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 बी डिवीजन का मुकाबला पूल ए का मैच हॉकी बंगाल वर्सेस हॉकी गोवा के बीच ये मुकाबला बहुत ही शानदार तरीके से कवरेज आप तक चेन्नई के इंटरनेशनल स्टेडियम इस समय में राधा कृष्ण स्टेडियम जो 2 बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की भी मेजबानी कर चुका है। और बंगाल अगर देखें इस मैच में इससे पहले एक मुकाबला खेला इन्होंने 2-0 से जीत की थी इन्होंने अरुणाचल के खिलाफ मुन्ना कुमार और शिवम पात्रा ने गोल किया था। वहीं गोवा की टीम में एक मुकाबला खेले हैं छत्तीसगढ़ के खिलाफ 4-0 से हार का सामना करना पड़ा था। बहुत ही शानदार हमारी कमेंट्री टीम है, हमारे साथ मयूर है, साथ ही साथ सीनियर कमेंटेटर बात करें जो लगातार शमीम आलम जी
साथ में अरबाज पूरी टीम और प्रोडक्शन की टीम जो लगातार आप तक ये शानदार कवरेज पहुंचा रही है। और आप देख सकते हैं इस वक्त जो बंगाल की टीम है लेफ्ट से राइट अटैक कर रही है। बहुत ही शानदार टीम ये मानी जाती है, पिछला मुकाबला जीत कर आई हिमाचल के खिलाफ। क्या निरंतरता रख पाएंगे, फिलहाल देखना होगा इस बीच खूबसूरती के साथ जर्सी नंबर 15 बॉल के साथ इस वक्त रतन बिंद 20 मीटर रेखा के आसपास खेलता हुआ गोवा जो कि राइट से लेफ्ट अटैक कर रही है। गोवा से ग्रीन और ब्लू कलर की जर्सी में है। गोवा टीम की कप्तानी इस समय दिलशाद अली के कंधों पे है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें इस वक्त जो टीम में शुभम खतरा कप्तानी कर रहे हैं। दिस बार स्ट्राइकिंग सर्कल के पास पहुंचे ये वो खिलाड़ी जर्सी नंबर 17 इस वक्त गोवा के लिए, वहाँ पे लक्ष्मण एलप्पा ये खिलाड़ी इस वक्त गोवा के हाथ में खेलता हुआ। बहुत ही शानदार हॉकी की झलक, भारतीय हॉकी का इतिहास पूरी दुनिया में बहुत ही गौरवशाली रही है। 8 ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल से लेकर के भारत की हॉकी विश्व कप पे जहां पाकिस्तान को हरा करके और कई ऐतिहासिक लम्हे रहे हैं। और पिछले दोनों ही ओलंपिक्स में भारत ने ब्रॉन्ज जीता। फिलहाल इस बीच स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर इस वक्त बहुत शानदार प्रयास होता हुआ इस समय काबिल तारीफ है। इस वक्त अगर बात करें हितेंद्र जग तो मौजूद है बंगाल के लिए, प्रयास किया था उन्होंने लेकिन स्टिक से टकरा कर गेंद चली गई। बात करें बाहर, इसलिए बॉल पोजीशन इस समय गोवा के पास बहुत बढ़िया तरीके से इस समय दूसरा क्वार्टर गोवा की टीम अब अटैक पे राइट फ्लैंक से 2 खिलाड़ी कमिट किए हैं इस समय, पुश किया लेकिन बॉल ट्रैप किया खूबसूरती से डॉटेड लाइन स्ट्राइकिंग सर्कल के बीच में। बहुत अच्छी रणनीति यहाँ पे नजर आती है। जिस तरीके से हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत की अभी पिछले सीजन, कमाल के रिस्पॉन्स व्यूवर्स देखने को मिले, कमाल के हॉकी की जो भारत की संस्कृति है बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे हॉकी के प्रति लगाव। बंगाल की टीम राइट फ्लैंक से अटैक बनाती हुई जैसे नंबर 9 बॉल के साथ इस समय शिवम रविदास ने साथ खिलाड़ी को दिया, पास किया खूबसूरती से मिडफील्ड में, लगातार स्पेस नहीं दे रहे हैं गोवा के खिलाड़ी, काफ़ी अच्छी डिफेंस की शैली उनकी। और फिलहाल एक बार फिर से बॉल को टैकल किया खूबसूरती से गोवा अटैक पे, काउंटर अटैक करती है गोवा की टीम खूबसूरती के साथ, अच्छा पुश किया शानदार तरीके से, क्या बेहतरीन पास रिवर्स स्टिक से टॉमहॉक क्रॉस आया लेकिन ठीक तरीके से अगर बात करें मिडफील्ड में नहीं रख पाए। आज के इस मैच के अंपायर की बात करें राजीव एस और साथ में हरीश इस समय बतौर अंपायर, स्कोरिंग जज हैं दिनेश, साथ ही साथ समीर टाइमिंग जज की भूमिका में है, रिजर्व अंपायर हैं सजल एनबी और टेक्निकल ऑफिसर विक्रम बी। बहुत ही शानदार यहाँ की टीम है जो लगातार बेहतरीन तरीके से इस समय स्मूथली इस इवेंट को होस्ट करते हुए और कंडक्ट कराते हुए अपनी शानदार बात करें सर। बंगाल की टीम पहले क्वार्टर में भी 1-2 उनका बात करें पेनल्टी कॉर्नर मिले लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाए, ज़्यादातर बॉल पोजीशन ही उन्होंने रखे। गोवा शॉर्ट पासेस पे बंगाल लगातार अच्छे हाई प्रेस कर रही है, बढ़िया लिंकअप प्ले, बेहतरीन कॉम्बिनेशन नजर आता हुआ उनके बीच, लेकिन जो एक म्यूजिक आक्रमण जिसकी मैं जिक्र करता हूँ जो गोल पोस्ट तक जाकर खत्म हो उसकी दरकार होती है। फिलहाल गोवा के खिलाड़ी क्या स्पीड है, क्या स्किल है, बहुत ही सुंदरता के साथ स्ट्राइकिंग सर्कल में दाखिल हुए, 3 खिलाड़ी उन्हें मार्क करते हुए, बहुत ही बढ़िया प्रयास इस समय इस गोवा के 30 तर्रार खिलाड़ी इस समय तारीफ करनी होगी जो रफ्तार इनकी देखने को मिले। फिलहाल काउंटर बंगाल रतन बिंद राइट फ्लैंक से, रतन एक बहुत अच्छे मिडफील्डर हैं, शानदार क्या बढ़िया तरीके से कोशिश उनकी लेकिन बेहतरीन इंटरसेप्ट किया इस समय और बॉल कंट्रोल, बहुत अच्छी हॉकी देखने को मिल रही है दोनों टीमों के दरमियान। दोनों टीमों ने एक मुकाबले खेले हैं, बंगाल जीत कर आई है, वहीं गोवा को हार का सामना करना पड़ा था, उनके लिए मैच निर्णायक आज अगर बात करें डे 3 है, मैच नंबर ओवरऑल 15। लगातार काउंटर अटैक अच्छी बना रही है, तारीफ करनी होगी गोवा की टीम की भी, बहुत ही शानदार तरीके से काउंटर अटैक पे ये टीम में ज़बरदस्त समय कमाल की कोशिश है उनके द्वारा, बेहतरीन अंदाज में यह मुकाबला घटित होता हुआ दूसरे क्वार्टर का ये मैच बहुत अहम रहेगा दोनों टीमों के बीच। ये बैटल अभी तक लगातार इस समय बेहतरीन तरीके से राइट फ्लैंक से बॉल लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बिंद बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं, इस समय स्ट्राइकिंग सर्कल में प्रवेश किया था खूबसूरती से, लेकिन उतनी ही बढ़िया टैकल। गोवा की डिफेंस की भी तारीफ करनी होगी, गोवा की डिफेंस बहुत ही लाजवाब और
फ्लो टैकल के लिए जानी जाती है, फर्स्ट टच में क्लियर करते हैं। ये भी एक बड़ी शानदार अगर बात करें संकेत है इस टीम के नज़रिए से। मुकाबला बेहद दिलचस्प, इसे हम आपको बता दें ये मुकाबला इस समय इन दोनों टीमों के बीच। आपको बताते चले पूल ए में हॉकी गुजरात, हॉकी छत्तीसगढ़, हॉकी बंगाल, हॉकी गोवा, हॉकी अरुणाचल। हॉकी गुजरात ने 2 मुकाबले जीते हैं, हॉकी छत्तीसगढ़ ने 2 में से 1 जीत और बात करें एक मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना। बंगाल ने 1 मैच खेले हैं, 1 जीत और जीती है। गोवा ने 1 मैच खेले हैं, 1 गंवाए हैं। और अरुणाचल ने अपने दोनों मुकाबले गंवाए। इसी बीच जहाँ पे ट्रैक बनाने की कोशिश बहुत शानदार तरीके से बंगाल की टीम के द्वारा, और आक्रमण जिस तरीके से आइए रिप्ले पे नजर डालते हैं, बहुत ही शानदार कवरेज यहाँ पे देखने को मिलता हुआ। ये प्रयास लिया, खूबसूरत स्ट्रेच करके गए, बचाव करने का प्रयास था, सेव करने की कोशिश। जर्सी नंबर 15 लगातार बंगाल के लिए रतन बिंद मिडफील्ड से बेहतरीन बॉल सप्लाई हो रही है। मिडफील्ड बहुत इंपॉर्टेंट मॉडर्न हॉकी में। जर्सी नंबर 8 इस समय अभिषेक शॉट स्ट्राइकिंग सर्कल में बेहद क्लोज गोल माउथ मौका हो सकता है इस समय गोल करने का। वापस इस समय बॉल रिबाउंड पे आई, इस समय लगातार मंडरा रहा है गोलकीपर के ऊपर। प्रतीक गुप्ता गोलकीपर है गोवा के, डिफेंस के लिए बड़ी मुश्किल स्थिति रहेगी। सचिन सुरेश, सत्यम कुमार, शाहिद खान, सूरज सुधीर, दिलशाद अली इस समय पूरी तरीके से अगर बात करें स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर अपनी गोल पोस्ट की रक्षा करते हुए दूसरे क्वार्टर का खेल प्रगति पे है। बहुत ही शानदार तरीके से मुकाबला आगे तक घटित होता हुआ। दिलचस्प ये मैच देखना होगा इसमें रणनीति क्या रहेगी। बेहतरीन अंदाज में ये मैच अभी तक गोवा के खिलाफ इस समय लगातार बंगाल की टीम अभिषेक शॉ और शिवम रविदास अच्छा कॉम्बिनेशन स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर गए, मौका बना हुआ इस समय गोल के लिए। राइट फ्लैंक से मौजूद है वहां पे अगर बात करें को अहम खिलाड़ी मुन्ना कुमार, पिछले मैच में गोल करके आए हैं मुन्ना, काफी तेज-तर्रार खिलाड़ी है मुन्ना कुमार। लगातार इस समय अटैक भी हो रहा है, सुनहरा मौका लाइन छोड़कर आए प्रतीक गुप्ता गोलकीपर खतरे को टाला इस समय, एंगल को ब्लॉक किया क्योंकि कोई भी गोलकीपर सबसे क्लोज मैच को फॉलो करता है। आइए नजर डालते हैं बहुत अच्छी रणनीति यहाँ पे प्रतीक गुप्ता की, क्योंकि बहुत शानदार तरीके से बॉल लेकर आगे बढ़ रहे थे, मुश्किलें बना सकते थे। फिलहाल अब काफी टाइम बाद गोवा आक्रमण पे जर्सी नंबर 3 सत्यम कुमार पंडित बॉल के साथ लेफ्ट फ्लैंक से पास किया साथी खिलाड़ी को। सत्यम पंडित से इस समय साहिल प्रमोद स्ट्राइकिंग सर्कल के पास गए, लेकिन बंगाल की टीम का डिफेंस बहुत सुदृढ़ है। इस बार हल्के से एरिया बॉल के साथ टैकल करने का प्रयास। गोवा वर्सेस ये मुकाबला बंगाल के बीच दिखना होगा इस समय शानदार तरीके से। ये मुकाबला बहुत क्रूशियल है गोवा की टीम के लिए, दो लड़ाई क्योंकि पिछला मैच उन्हें हार का सामना करना पड़ा था छत्तीसगढ़ से। वहीं बंगाल ने 1 मैच जीता है, इस पुल में छत्तीसगढ़ भी है, तो ये ज़रूर नज़र रखेंगे क्योंकि हर पुल से क्वालिफाई होने के लिए आपको बेहतर नेक्स्ट 100 की दरकार रहती है और हर मैच इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अंपायर आज के मैच के राजीव एस और हरीश चौकी अगर बात करें इस मैच के अंपायर फिलहाल इस समय बंगाल एक वापस से तेज गज की रेखा से कुछ किया था खूबसूरती के साथ, लेकिन क्लियर किया इस समय गोवा के डिफेंस ने। गोवा के डिफेंस से काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है और यकीनन तौर पर देखें इस दूसरे क्वार्टर में कई अच्छे अटैक्स बिल्ड की है, लेकिन उसे गोल के रूप में तब्दील होने नहीं दिया है। ये स्ट्रेंथ है, ताकत है इस डिफेंस की। तो सॉलिड डिफेंस कप्तान ने दिलशाद अली, सूरज सुधीर, शाहिद खान, सत्यम कुमार पंडित और सचिन सुरेश जैसे डिफेंडर तो इस टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। हालांकि ऑल हॉकी का रवाना है, फिलहाल देख सकते हैं हॉकी बंगाल 0 गोवा हॉकी इस वक्त भी 0। 15 हॉकी इंडिया से जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप का आज ये तीसरे दिन का पहला मुकाबला और ओवरऑल 15वां मैच। और हॉकी इंडिया आप यूट्यूब पे जा करके हॉकी इंडिया मीडिया टाइप करें, पहले दिन से ही लगातार शानदार तरीके से कवरेज इन मैचों का। फिलहाल वापस है गोवा की टीम, हॉकी इंडिया की तारीफ करनी होगी इस अंदाज में। पहले दिन अगर बात करें हॉकी इंडिया के तमाम टीम कोच मौजूद थे, सेक्रेटरी जनरल मौजूद थे, भोलानाथ सिंह जी, दिलीप टर्की जी, पद्मश्री लीजेंड
हॉकी खिलाड़ी और प्रेसिडेंट हॉकी इंडिया, साथ में 𝐶𝐭 जी और फिलहाल इस बीच बहुत शानदार कोशिश गोवा के द्वारा काउंटर अटैक पे, बहुत बढ़िया प्रयास किया था इस समय, गोल तब्दील करना चाहते थे। शानदार काउंटर अटैक पे ये टीम जानी जाती है अपने प्रदर्शन के लिए। बेहतरीन तरीके से प्रयास उनके द्वारा इस समय, लाजवाब तरीके से। इस बीच देखना होगा रणनीति क्या रहेगी। पुश किया एक बार फिर से बंगाल अब के साथ है, बंगाल की टीम वहाँ पे रणनीति बहुत अहम इस मैच के नज़रिए से। मिडफील्ड में खेल होता हुआ दिलचस्पी साफ नजर आ रही है इस मुकाबले में। कमाल का ये माहौल इस समय खेल के लिए। इस बीच बॉल को कंट्रोल किया खूबसूरती के साथ, राइट फ्लैंक से आगे बढ़ने की कोशिश और इस बार पेनल्टी कॉर्नर। इन्फ्लुएंसमेंट हुआ यकीनन तौर पे वहाँ पे पीछे से टैकल करने का प्रयास। हॉकी के जो बुनियादी रूल है इसमें आप जानते हैं पीछे से टैकल अगर आप करते हैं, ये भी अगर बात करें यहाँ बहुत बड़ी गलती द्वारा की गई। शायान मंडल ने गलती की और उसका खमियाजा पेनल्टी कॉर्नर के रूप में। अभी तक दोनों टीमों को पेनल्टी कॉर्नर्स मिल चुके हैं, स्पेशली बंगाल को ज़्यादा पीछे मिले हैं, लेकिन कन्वर्जन उतना बेहतर नहीं है। तो यहाँ पे मौका रहेगा यकीनन तौर पे क्या पेनल्टी कॉर्नर को कन्वर्ट कर पाएंगे गोल के रूप में, ये देखना बहुत अहम इस मैच के नज़रिए से। 4 मिनट के आसपास का खेल शेष। गोलकीपर के अलावा 4 डिफेंडर फर्स्ट रशर के साथ एग्जैक्ट किया, स्टॉप हिट लिया, तेज तर्रार हिट और इसी के साथ खूबसूरती के साथ यह प्रयास किया गया, लेकिन गोल पोस्ट के अंदर गोल के रूप में तब्दील नहीं कर पाए। बहुत अच्छा प्रयास था, बहुत ही जोरदार हिट लिया था इस समय गोवा के। बात करें आगे रिप्ले पे प्रॉपर देखते हैं, ये था इंजेक्शन, स्टॉप, ट्रैक और यहाँ पे अगर देखें गोल पोस्ट के अंदर नहीं रख पाए। फिलहाल इस समय नजर डालें अभी भी स्कोर लाइन 0-0। दूसरे क्वार्टर की खेल जारी है, बेहतरीन ये मुकाबला इस समय घटित होता हुआ अभी तक रोमांचित करने वाले पर। और मिडफील्ड में एक बार फिर से खेल होता, गोवा की भी तारीफ करनी होगी, क्विक अटैक बनाती है टीम, शानदार तरीके से तारीफ काबिल। तो गोवा की टीम की ताकत है, शानदार खेल का प्रदर्शन दिखाती हुई इस समय। अभी भी स्कोर लाइन 0-0, हालांकि बंगाल ने ज़्यादातर बॉल पोजीशन अपने नियंत्रण में ली है और गोल भले ही देखने को ना मिला, लेकिन रोमांचित और स्किलफुल हॉकी दोनों टीमों के बीच देखने को मिल रही है। और एक बार से बंगाल की टीम स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर पुश किया, डिफ्लेक्शन, शानदार डिफ्लेक्शन की उम्मीद में बंगाल की जर्सी नंबर 15 रतन बिंद, क्या खिलाड़ी है, क्या स्पीड है, स्टीक वर्क इस खिलाड़ी का। इन्हें मार्क जरूर किया था रतन बिंद, पिछले अटेम्प्ट का ये नजर डालेंगे खूबसूरती के साथ। यहाँ पुश किया था आगे की तरफ, सेंटर किया, टेक्निकल अगर हॉकी की बुनियादी देखें शब्दावली, बेहतरीन तरीके से ये मुकाबला अब तक बढ़ रहा है। आगे सभी काउंटर अटैक पर गोवा क्विक काउंटर अटैक बनाती है टीम, गोवा के लिए भी तारीफ करनी होगी लक्ष्मण येलप्पा, साथ ही खिलाड़ी दर्शन कुमार। और ओवरऑल अगर देखें बहुत अच्छी टीम, और यहाँ पे भी एक और पेनल्टी कॉर्नर, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये नजर आते हैं किस तरीके से पीछे मिला ये यकीनन तौर पे जो टैकल करने के प्रयास में गलती हुई वहाँ पे बाधित किया गया और इसी वजह से एक और पीसी पिछली बार भी पेनल्टी कॉर्नर मिला था। इस बार इंजेक्शन के लिए कौन जाएंगे, जैसे नंबर 10 इस पर शाहिद प्रमोद जा रहे हैं। वही डिफेंस लाइन में गोलकीपर आदित्य शॉ के साथ मौजूद है, डिफेंडर तारिक फर्स्ट के साथ इंजेक्ट, स्टॉप, वेरिएशन हर किसी तलाशी, टॉमहॉक साइड नैरो एंगल के साथ गोल पोस्ट में नहीं रख पाए, बड़ा टफ हो जाता है इस एंगल से। बहुत ही शानदार तरीके से ये हॉकी देखने को मिलती है। मेजबानी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम या राधा कृष्ण स्टेडियम, ये वो मैदान जहाँ एशियन चैंपियंस ट्रॉफी से लेकर तमाम बड़े इवेंट की मेज़बानी कर चुका है। ये मैदान काफ़ी ऐतिहासिक मैदान है और यहाँ अगर देखें काफ़ी बेहतरीन बनाया गया है इस मैदान को, क्योंकि इस मैदान से कमेंट्री करने का सौभाग्य खेलो इंडिया में मिला था
साथ ही साथ एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भी इस मैदान से। फिलहाल देखना होगा इस बीच बहुत ही शानदार तरीके से काउंटर अटैक बनाने की कोशिश, बेहतरीन प्रयास होता हुआ, लेकिन बॉल को अपने नियंत्रण में लिया इस समय। खूबसूरत तरीके से बॉल को कंट्रोल किया इस समय बंगाल के खिलाड़ी। एक स्लैप शॉट खूबसूरत इस समय 23 मीटर रेखा के पास मैन टू मैन मार्क कर रही गोवा की टीम, स्पेस नहीं दे रही। ये बहुत अच्छी सोच है इनके द्वारा। तो लगातार और देखिए काउंटर अटैक पे ये ताकत इस टीम की। साहिल प्रमोद से साथ साथ मौजूद है इस समय सूरज सुधीर, इस टीम के एक और महत्वपूर्ण खिलाड़ी। आखिरी मिनट अब इस तीसरे क्वार्टर का, अभी भी मुकाबला गोललेस है 0-0। क्या इस मुकाबले में तीसरे क्वार्टर तक या चौथे क्वार्टर तक ये मैच स्कोर देखने को मिलेगा? बेहतरीन तरीके से आप तक ये कवरेज लगातार पहुंच रहा है हॉकी इंडिया मीडिया यूट्यूब चैनल पे। कॉन्ट्रोवर्सी में विकास, मेरे साथ मयूर बरुआ जी, शमीम आलम जी और पूरी प्रोडक्शन टीम इस समय। फिलहाल देखना होगा इस बीच लगातार मिडफील्ड में खेल होता हुआ, वक्त धीरे धीरे निकल रहा है इस समय दूसरे क्वार्टर का। देखना होगा इस बीच एक और आक्रमण गोवा के द्वारा। अंपायर काफ़ी इस समय बेहतरीन पैनी निगाहें राजीव एस और हरीश आर्मी सेफ्टी की शानदार अभी तक दूसरा क्वार्टर इस समाप्ति की तरफ अग्रसर बढ़ रहा है इस बीच। जर्सी नंबर 7 बंगाल के लिए बॉल लेकर आगे बढ़ रहे थे विकास फील्ड की आवाज इस बात की संकेत करती हुई कि ये मुकाबले के दूसरे क्वार्टर की समाप्ति हो चुकी है और दो क्वार्टर की समाप्ति के बाद भी स्कोर लाइन अभी भी 0-0 है। पहली गोल की तलाश है, तलब है। और देखना होगा 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप बी डिवीजन का यह मुकाबला चेन्नई के हम मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम से आप तक सीधा लाइव एक्शन लेकर पहुंच रहे हैं। आज तीसरा दिन है, मैच नंबर 15। देख सकते हैं हाफ टाइम के स्कोर, हॉकी फुटबॉल 0, गोवा हॉकी इस वक्त 0। हॉकी इंडिया में खूबसूरत है मेजबानी में। आप कहीं मत जाइए, हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले तीसरे क्वार्टर की जब आगाज होगी, शुरुआत होगी, हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे इंग्लिश के बेहतरीन कमेंटेटर बात करें मयूर बरुआ जी, और साथ में आने वाले मैचों में शमीम आलम जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे।
Good afternoon to everyone again, and welcome to the third quarter of this match number 15 of day number 3 of this 15th Hockey India Sub-Junior Man National Championship. The scoreline are yet to be opened, both from Hockey Bengal and GOANS Hockey. The scoreline still says 0-0. Thank you so much, Vikas. And I'm sure there's been so much fun-filled action that you have seen in the first quarter, then the second quarter. Both the teams, I don't know how much deserving they are to see the 0-0, but good attacking hockey that you have seen. First, especially from Hockey Bengal, give the 2 minutes break. You have GOANS Hockey coming up so well on the back of a loss, and now they are doing everything they could. Now the sides will be changing. This is where on the right hand side, from the left to right, GOANS Hockey will be attacking for goals. From the left to right, from right to left, beg your pardon, on your picture, that's where Hockey Bengal are now changing to romp the goals. 0-0, important quarter this season. Hockey Bengal 2-0 versus Hockey Arunachal. They came so very close to get some goals early on. 2 penalty corners in the first half, but they couldn't convert those. We also went for referrals upstairs. So some dramatic passes of play did we see, isn't it? Both the quarters, and in a very good company as commentary panel. Behind the mic, I'm Mayur Parwa, and we have the likes of Mr. Shami Malam, the stalwart of our commentary panel. 40+ years of commentary, let me tell you, boys and girls, ladies and gentlemen. That's how much Mr. Shami Malam possesses. And also Mr. Vikas Kumar. Both of them grew in Hindi. And we also have Mr. Arbaz Khan. He's the youngest of the lot of our commentary panel. But all four, he's trying to do justice with this championship. Moment good attacking hockey going on from Hockey Bengal at the moment. Right from the center, just trying to give it a very nice pass, only to get the stick of Hockey Bengal midway. Just trying to put some reverse attacking there, almost like a counter attack on GOANS Hockey. It's good to see that they are now trying to put it at par of what Hockey Bengal has been doing early on. This is so very required. Both of them yet to open their account at 0-0. So it's good to see that the pressure that the boys in Team Goa are putting on Bengal, probably an unusual situation for Hockey Bengal at the moment, not to see themselves in this situation. Almost a 360-degree. It's a very good pass, but only onto the stick of GOANS Hockey, rattling across. It's a diagonal pass right from the far corner. Can they get it? Almost passing the half of the center line there. Again, it's a pass back to Hockey Bengal. But look at that man, Ratan Bean, as I've mentioned before. He's such a good one at the forwards. Puts it at a very nice pace. And this time it's Gaokar Chetan Ram Krishna from GOANS Hockey, who is going very well, almost into the striking circle. Can he get it? He's trying to put him inside zone. Trying to just pass it. Couldn't get, unfortunately, only to find the stick of Abhishek Shaw from Bengal Hockey. Or rather, I say Hockey Bengal. Good channeling of energy from both the teams. 50-50, I'd say, at the moment. I think they've been facing up very different kind of GOANS Hockey at the moment. Inside the striking circle again. Gets a deflection from the stick. And he signaled the penalty corner. You don't see it very clearly. The sun has also come out very strongly for venue. There we go. With that sound, that music which gets played on the at the background, I'll only tell you that there's some kind of infringement which has happened immediately. Bengal Hockey appeals, and the umpire says that, yep, you've got the penalty corner for yourself. So the third penalty corner, twice in the previous quarters, now in the third quarter, already inside the 4th minute. The blow of the whistle. Insertion has been done. Like a broom, gets rebounded from the stick of number 10. That was Turi Suzal. But only will get out of bounds. Yet to open the scoreline for both the teams. 0-0.
very good push after the insertion. Where you can see this camera angle will give you a very good pass, bisecting all the three defenders underneath the stick. But again, the line which mattered the most was not to be. The ball just goes out of bounds. But again, that push, the drag push was very well articulated from that angle. It was very nice, isn't it? You will also have the voices of the crows going underneath. You have the natural factor also. But what a good camera angle this is, isn't it? Such a nice eagle's eye view. You see everyone, the shadows very properly. The huge venue of this AstroTurf here. We are located here in Chennai, in Tamil Nadu, this match. On the right hand side, it's where GOANS Hockey will be defending the third and the fourth quarter. Some lovely passes, some aerial passes into the zone for GOANS Hockey at the moment. Bengal Hockey. Putting through diagonal pass on to the stick of Shivam Ravidas and Abhishek Shaw initially through the blade of Ratan Ping. That was in the first quarter. Came very, very close of getting on a line to get a goal inside the striking circle. He passes, gets onto the stick of GOANS Hockey the fourth time now that Hockey Bengal gets a penalty corner. That music will be rattling for the years of GOANS Hockey. But you see where the influence will probably happen. There we go. The stick on. That's the reason why the umpire just chooses to move to his right to signal the penalty corner. Can this be the chance for them to get it twice? They tried earlier, but it was not to be. Blow the whistle. Come across a very strong 0-1. This time trying to sweep it across, not much power. Oh, he has to really do that again. Probably GOANS Hockey have come out of the post a little early on. That's the reason why they are saying one of them has to go out and start it all over again. As per the rules, you cannot come out of your post earlier before the insertion has been done. The whistle. It's a slow one, trying to articulate, making into a 360-degree. This time it pushes through from the angle of the goalkeeper. The first goal comes for Hockey Bengal. Not surprisingly, the fourth penalty corner this time has gone into the advantage of Hockey Bengal. 360-degree circle, and whether it has come from the stick of number 14 Munna Kumar Singh. Yes, there we go. It first was Abhishek Shaw who took a shot into the goal post, and then from the stick of Munna Kumar Singh, it went into the goal post. Munna Kumar Singh in the 37-minute field goal versus Hockey Arunachal, and now in the third quarter gets his name. So the first goal for Hockey Bengal versus GOANS Hockey. Very, very good. You see of how it happened before. We're looking at the replay of the thrust on the ground as the players just falls down. That was Subham Patra, the captain himself, who fell down. But the pressure remains on GOANS Hockey as Bengal Hockey has finally managed to get a penalty corner in their name from the blade, hopefully from Munna Kumar Singh. Haven't get any official confirmation. Hockey Bengal will steal the show from the stick of GOANS Hockey to strike very much ahead from the corner. We'll go ahead. The whistle blowing up from the assistant referee. This is preening through his eyes from the corner as the ball just goes slightly out of bounds as he was trying to go ahead. Hockey Bengal, you can now feel the spring in the strikes for sure. Try to get as many goals as possible. The last match, Hockey Manipur, they won 10-1 versus Hockey Andhra Pradesh. That was the last match of the day yesterday. We'll be having just one more match today at 3 p.m. Remember, it will be Hockey Himachal versus Telangana Hockey at 3 p.m. It's also going to be a very good matchup. Both the teams on the back of a loss.
Hockey Himachal losing the last encounter 1-6 versus Kerala Hockey. And then Telangana Hockey losing the last match 1-7 versus Manipur Hockey. Penalty corner. Now again coming in, and look at who will be putting that one. Again, the heartbeats will go up for Hockey Bengal because they have now another chance to move it up. And the stick just came in as an infringement, resulting in the penalty corner. Then 7 minutes to go by in this third quarter of the second half. This blows up. Exertion. And let's see, it has been stolen. That was Subham Patra, the captain. Oh, something is coming out of the trouser. Oh, not good. It's a booking which has come up. Now, the initial few minutes, a player from Hockey Bengal had to sit from the sideline because of the green card, which means for a stipulated time, he'll be out of action. So 10 players currently for Hockey Bengal, make it 9 on the field, including the goalkeeper, excluding the goalkeeper, if I have to tell you. It's it's a foul play coming in from Hockey Bengal. 6 minutes remaining for the blow of the hooter, which is 360 seconds. Every second matters, isn't it, when in a fast-paced sport like hockey, probably faster than football. Bengal get straight through. For all the listeners, let me tell you, we'll be joined by Vikas Kumar in Hindi in the fourth quarter, and then in the next quarter, oh my goodness, another green card comes in. Another green card comes in. Another Bengal player. He says, "Welcome to the club." He says, "Come and sit along with me." So two of the players, the warming the benches. It's all about the heat. But this heat should have been to Goa. Now they're playing with 9 players, 8 on field, and the goalkeeper. It will be really, really interesting now to see why it's happening regularly again. And some of the coach really needs to fan in their mind. Still in the sub-junior category. And in the next match, I was mentioning, the commentary panel will be Mr. Shami Malam, and then me, Mr. Shami Malam, will be in Hindi commentary. I'll be with the mic in English. That will be for Hockey Himachal and the Telangana hockey match. Good matchup, isn't it? To put up both the teams. Himachal and Telangana got defeated, got trashed by 6 and 7 goals respectively versus Kerala and Manipur. So it is going to be a very good one. A very nice one, isn't it? As and when it comes up. Less than 5 minutes to go for the blow of the hooter. Just shooting up very correctly, and that's what the umpire said. It has come on the footing. He's trying to cross it up because the stick, you can see, hitting very hard on the ties. It's always good, isn't it? An official comes up, tries to check on you, just to save on time, and then you really know that you have the backing of some very good forward one. Oh, here's it come! Yo! GOANS hockey, they are thrilled to beat, make it 1-1. At the fag end of the third quarter, the Green Army comes in from the south into the southern corner of Chennai. Look at that! Everyone falling, but the ball stays. It's very slightly sneaks past the goalkeeper between two of the offenders and then into the goalpost. Very ever so slightly slow. Hockey Bengal 1, GOANS Hockey 1. And into the 3.5 minutes remaining for the third quarter. Now this is going to be a very good matchup. Hockey Bengal now feeling the heat. GOANS Hockey, can they do
Can they master the courage to put it to? Then this will be such a humongous recovery for Goans hockey. One of the players where he was in the air with the stick, and why not? Why not? He needed that goal, and they have got it at the fang end of the third quarter. Bengal hockey trying to get inside the striking circle. Ball will just go out of bounds. The scoreline still remains 1-1. Both the teams know time is just going out like quicksand. Get one goal of any of them, and they will go as cool as cucumber into the dugout. It is the last quarter. The fourth quarter will be absolutely dramatic, I'm sure. Both of them will be pressing concerns. Both of them will try and press for goals from the corner. Get some bit of a good branding of attacking hockey. Goans hockey striding ahead. And that's a Jambotkar Sahil Pramod with the ball. But the bondage will be broken from the blow of the whistle. Prasad is still there. Beg your pardon, Pramod is still there. But nothing much that he could do. Well, less than 2 minutes of gameplay remaining. What a good attacking, counter-attacking. It keeps on moving here. They're channelizing some chances. And more of Goans hockey. You can see what difference it can create when a goal comes to your quarter. In this, suddenly you can feel a surge of energy, and suddenly you can see it's more of green color versus the violet and white of Bengal, who are racing towards to get one more goal, and that's actually very good to see. Someone, if you love statistics, Goa lost 0-4 versus Chhattisgarh, so this match was so important, and look at how they're trying to make a comeback. At the moment, 1-1, less than 4 minutes, was less than 3.5 minutes remaining when the goal came in for Goans hockey. And so now Hockey Bengal has to just re-strategize themselves on and off the field. First it will be off the field when they go into the fourth quarter, as now we have just less than 1 minute remaining for the blow of the hooter to signal the end of the third quarter. So it will be very much on Hockey Bengal rather than Goans hockey to think more differently of how they can just put it here. Slightly across from the corner. Bengal again trying to get it as a stick by stick. Goans hockey getting passed through, but couldn't break through the defenses of those four of them on the forwards line. Just in 14 seconds remaining here on as the stick comes in right on time. Just made that ball wobble up on the downstairs. Number 9 trying to put up a very good pass, but unfortunately couldn't get past the two of the defenders. The stick comes in very hard. That was Shivan Ravidas, and the blow of the hooter to signal the end of the third quarter. It has been such a dramatic third quarter. 1-1 for both the teams. Hockey Bengal 1 for Goans hockey. As they go into the shadows of the dugout, I'll also go out to have some gulp of energy. But the energy will not stop here, because there's one more quarter, the last quarter coming in for match number 15, and that will be the voice of my colleague in Hindi, Vikas Kumar. बहुत बहुत थैंक्स और शुक्रिया मयूर। बहुत ही शानदार हॉकी वाकई में देखने को मिली। तीसरे क्वार्टर में 2 गोल देखने को मिले, जहाँ पे पहले बंगाल के खिलाड़ी ने 37 मिनट में मुन्ना कुमार सिंह ने गोल किया। उसके बाद गोवा की तरफ से 42 मिनट्स में ये गोल आया, यानी कि मुकाबला बराबरी पे है इस वक्त 1-1 की स्कोर लाइन। तीसरे क्वार्टर में दोनों ही गोल आए। 2 क्वार्टर तक ये मुकाबला अगर बात करें बराबरी पे था, 0-0 स्कोर लाइन था। अभी भी बराबरी पे है, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट गोल देखने को मिले। अंकुश गोयनकर ने गोल किया था, बात करें गोवा के लिए। बहुत ही शानदार आखिरी क्वार्टर बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, जहाँ पे 2 टीमें अगर बात करें एक्शन में है 15वीं हॉकी इंडिया से दुनिया नेशनल मेंस चैंपियनशिप का डे 3 मैच नंबर 15। और देख सकते हैं दोनों ही अंपायर इस समय इस मैदान में। बहुत ही शानदार तरीके से अगर बात करें ये मुकाबला, पिछले मैच में भी बात करें बंगाल के लिए मुन्ना कुमार ने ही गोल किया था, और इस मैच में भी पेनल्टी कॉर्नर को उन्होंने गोल के रूप में तब्दील किया। शानदार गोल करके बंगाल को 1-0 की बढ़त दिला दी थी।
लेकिन अंश अंकुश गोयनकर ने और लीजिए अब गोल करके बराबरी बनाई थी। अब आखिरी क्वार्टर की खेल की शुरुआत होती हुई दिलचस्प ये मुकाबला इस समय काफी इंटरेस्टिंग ये बैटल जर्सी नंबर 8 बंगाल के लिए। बंगाल अब इस वक्त राइट सेलेक्ट अटैक कर रही है। लेकिन आपके बाद गोल पोस्ट बदलता है, क्या तस्वीर बदल पाएगी देखना होगा इस पीछे। जर्सी नंबर 8 बंगाल के लिए जहां पे 𝐕𝐭𝐶 और फिलहाल एक खिलाड़ी वहाँ चोटी हुए हैं गोवा के। हम आशा करेंगे इंजरी ज़्यादा ना हो। जर्सी नंबर 5 सूरज सुधीर कारसेल मौजूद है। सूर यहाँ पे अंपायर अगर बात करें राजीव एस व हरीश फार्मशेट्टी और ये है बेंच इस वक्त। अगर देखें ये वो बेंच इस वक्त नजर आता हुआ बंगाल का। बंगाल की अगर बात करें कोच की, जहाँ पे बप्पा शाह टीम मैनेजर इनके प्रथा टीम में मुखर्जी मौजूद है। काफी बढ़िया प्लान करके आ रही है टीम और उस प्लान को एग्जीक्यूट कर रही है के रूप में। बहुत ही बेहतरीन हॉकी की झलक रोमांचित करने वाले पल दोनों टीमों के लिए। बढ़िया हॉकी देखने को मिल रही है, बहुत शानदार ये गेम प्लान का एग्जीक्यूशन देखने को मिलता हुआ। फिलहाल एक वापस दोनों टीमों में काफी पेनल्टी कॉर्नर्स भी मिले, लेकिन इतना ज्यादा कन्वर्जन नहीं सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल के रूप में तब्दील किया था। फिलहाल इस बीच मिडफील्ड में खेल होता हुआ स्किलफुल और क्वालिटी हॉकी दोनों टीमों की पहचान रही है। देख सकते हैं समय स्ट्राइकिंग सर्कल के आसपास गोवा की टीम का अटैक बनता हुआ, लेकिन डिफेंस उतनी ही सुदृढ़ है, चौकस चौकन्ना है सभी। बंगाल के डिफेंस लाइन में देखें खुद कप्तान शिवम पात्रा, सरदार पवित्रा और की सलान मंडल जैसे खिलाड़ी रिजू मौजूद हैं जो डिफेंस की अहम रक्षा करते हैं सब। और एक बार से राइट फ्लैंक से आगे बढ़ने की कोशिश है, जहाँ पे इस वक्त गोवा के लिए जर्सी नंबर 14 बहुत तेज तरह खिलाड़ी रोशन कुमार नजर आ रहे हैं। उद्यमान खिलाड़ी हैं सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप पर अगर बात करें समय जिसकी मेजबानी कर रहा है खूबसूरत ये चेन्नई का मेयर राधाकृष्ण स्टेडियम। इस वक्त बंगाल के हाफ में खेल होता हुआ राइट फ्लैंक एक हल्की सी एरियल बॉल की कोशिश की, बॉल पोजीशन जरूर इंटरसेप्ट करने का प्रयास यहाँ पे दिलचस्प तरीके से मुकाबला। इस समय बंगाल की टीम की क्या शानदार कोशिश, स्ट्राइकिंग सर्कल में सेंटर किया, गोलकीपर को बीट किया और शानदार गोल, क्या जबरदस्त कॉम्बिनेशन में गोल किया गया है। तालमेल अद्भुत अविश्वसनीय और लाजवाब तालमेल के साथ देखिए किस तरीके से जर्सी नंबर 8 से जर्सी नंबर 4 का ये फिनिश। शुरुआत की 𝐕𝐭𝐶 ने और सुजन वाल्मीकि का ये फाइनल टच जर्सी नंबर 9 का आया है, जहाँ पे शिवम रविदास पहले क्वार्टर में भी शिवम रविदास ने काफी इम्प्रेस किया था। जिस तरीके से वो खेल रहे थे दर्शा रहे हैं अपनी क्षमता बहुत ही शानदार तरीके से। उनका प्रदर्शन समय सेंटर में इस समय बॉल आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पे देखना होगा। वापस गोवा के लिए अच्छी कोशिश, लेकिन डिफेंस में सरदार पवित्रा मौजूद है। बॉल को इस समय क्लियर किया खूबसूरती से और एक वापस से देखना होगा गोवा के खिलाड़ी बॉल को कंट्रोल करने का प्रयास इस समय। बहुत ही शानदार हॉकी वाकई में आज दो टक्कर की टीम है। पिछला गोल जर्सी नंबर 9 शिवम रविदास एक बेहतरीन असिस्ट और कॉम्बिनेशन का अद्भुत परिचय दिया था और ये की ताकत है, अच्छे कॉम्बिनेशन तालमेल और एक राइट फ्लैंक से वापस बंगाल की टीम अटैक बनाती हुई राइट फ्लैंक से एक बार फिर से डिफेंस जरूर यहाँ पे मैन मार्क करके स्पेस नहीं देने का प्रयास। अच्छी सोच यहाँ पे डिफेंस लाइन की और फिलहाल अभी भी देखें इस समय तो 2-1 की बढ़त पेनल्टी कॉर्नर दिया गया है इस समय और उसको लेकर के गोवा के वहाँ पे जर्सी नंबर 6 है दिलशाद अली जो कि कैप्टन हैं, वो वहाँ पे गए इस वक्त। दिलशाद जो कि गोवा के कप्तान इस बात के संकेत पेश करते हुए कि ये मुकाबले में पेनल्टी कॉर्नर को चैलेंज किया है उन्होंने। इसी एक और मिला है बंगाल के लिए। बंगाल की टीम पूरी तरीके से डोमिनेट कर रही है। इंजेक्शन के लिए कौन जाते हैं, बहुत ही शानदार ये मुकाबला। तो गुप्ता गोलकीपर पर निगाहें रहेगी, उनके साथ जर्सी नंबर 6 और जर्सी नंबर 12 खुद कप्तान मौजूद है दिलशाद अली। फिलहाल पुश किया, स्टॉप उतनी बेहतर नहीं, कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी। इस बार हिट और शानदार गोल
एक और कमाल कर दिया इस टीम ने, लगातार इस समय इस क्वार्टर में 2 गोल करके पूरी तरीके से बंगाल की टीम अब टॉप पे आ गई है। कमाल का ये मुकाबला, शानदार तरीके से ये मैच तक अद्भुत हॉकी दिखा रही है टीम, और ये ताकत है बंगाल का। ये नजर आते हैं रिप्ले पे, कमाल का बेहतरीन कवरेज देखने को मिलता हुआ, शानदार ब्रॉडकास्ट आप हॉकी का इंडिया चैनल पे, और बेहतरीन तरीके से समय ये मुकाबला अपनी सार्थकता के शिखर पे 3-1 की बढ़त बंगाल की टीम के लिए। पिछला गोल हितेन रजक ने, इससे पहले शिवम रविदास के स्टिक से गोल आया था, और हितेन रजक पिछला गोल उन्होंने कन्वर्ट किया गोल के रूप में। बहुत ही शानदार तरीके से इस समय मुकाबला देखने को मिलता हुआ, पूरी तरीके से ये मैच अभी तक बंगाल की टीम में डोमिनेट कर रही है। बहुत ही शानदार हॉकी की झलक में है राइट फ्लैंक से लगातार इस मुकाबले में बंगाल के लिए जैसे नंबर 8 एक खिलाड़ी आए नजर आ रहे हैं पिछले अप्रोच पे, खूबसूरती के साथ कैस्केड स्पेस बनाया। एंगल बहुत नैरो एंगल था, और खिलाड़ियों ने उन्हें जिस तरीके से घेर के रखा था, इसलिए बात करें पूरी तरीके से इस बॉल को गोल पोस्ट के अंदर नहीं फिनिश कर सके। 3-1 की बढ़त, 2 गोल देखने को मिले हैं। बेहतरीन ये मुकाबला, कमाल की हॉकी की झलक, और क्या शानदार ये मैच अभी तक के हॉकी की अद्भुत अगर बात करेंगे, खूबसूरत ये तस्वीर जिस तक आप लाइव एक्शन देख रहे हैं, और इस हॉकी इंडिया यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे बेहतरीन तरीके से ये मुकाबले की झलक आप तक पहुँचता हुआ, दिलचस्प रोमांच के बीच ये मुकाबला, कमाल की झलक यहाँ पे लाइव एक्शन आप देख रहे हैं हॉकी का, जिसका सीधा प्रसारण इस समय 3-1 की बढ़त हॉकी बंगाल के पास इस समय देखने को मिल रहा है। बेहतरीन रोमांच के बीच ये मुकाबला इस समय देखने को मिलता हुआ, शानदार तरीके से इस समय राइट फ्लैंक से वापस एक अच्छा अटैक, लगातार राइट फ्लैंक से अटैक हो रहे हैं इस अंदाज में सब है। बेहतरीन अंदाज में ये मुकाबला ये नजर आते हैं, जैसे नंबर 15 की ये प्रयास कितना बेहतरीन स्ट्रेच करके आए गोलकीपर, पूर्वानुमान इस समय बढ़िया जरूर उनका, लेकिन इस बार जिस तरीके से अगर देखें गोलकीपर को बीट नहीं कर सके, प्रयास तो शानदार नजर आया इस समय। मुकाबला 3-1 की बढ़त भी अगर बात करें बंगाल के पास ये मैच में पूरी तरीके से ये टीम डोमिनेट करती नजर आ रही है, शानदार तरीके से अभी तक ये खेल की झलक दिखाई है टीम ने, अद्भुत और अविश्वसनीय हॉकी, स्किलफुल हॉकी, बंगाल शॉर्ट पासेस के साथ अच्छा लिंकअप प्ले, उसी रेट अभिषेक शॉ की तारीफ करनी होगी, चाहे बात करें इसमें शिवम रविदास जिन्होंने गोल किया था, मुन्ना कुमार एक और तेज तरार खिलाड़ी इस टीम के, और ये 15वां मुकाबला ओवरऑल अगर देखें आखिरी क्वार्टर का ये मैच जारी, जबरदस्त हॉकी की झलक यहाँ पे देखने को मिल रही है, और जिस अंदाज में अभी तक दोनों टीमें खेल दिखाती हुई यकीनन तौर पे देखिए बंगाल का डोमिनेशन, गोवा ने भी काफ़ी अच्छे कार्य किए हैं, प्रयास उनके द्वारा काफ़ी अच्छे हुए हैं। इस बार एंगल को ब्लॉक किया और कोशिश हुई, पिछला गोल हितेन रजक ने किया था, उससे पहले शिवम रविदास के लिए अनसंकुश ने गोवा को गोल की थी 42वें, और मुन्ना कुमार सिंह ने गोल किया था 37वें मिनट में बंगाल के लिए। बॉल की हॉकी एक वापस से स्ट्राइकिंग सर्कल में दाखिल हुए, निरंतरता साफ नजर आ रही समय, खूबसूरत अटैकमेंट करते हुए बहुत ही शानदार अंदाज में, और एक और आज मुकाबला देखने को मिलेगा जिसमें हमारे सीनियर कमेंटेटर जुड़ेंगे, वहाँ पे शमीम आलम सर और मयूर जी। फिलहाल देखना होगा इस समय अटेम्प्ट पे नजर आते हैं, जैसे नंबर 15 के बहुत ही तेज तरार खिलाड़ी है, राइट फ्लैंक से कमाल के टैकल करते हैं। जैसे नंबर 15 की बात करें रतन बिंद, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से एक बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पर अपनी पहचान रखता है ये सितारा। देखना होगा इस बीच रणनीति क्या रहेगी, मिडफील्ड में खेल होता हुआ वक्त धीरे धीरे निकल रहा है, 3-1 की लीड इस समय। और आपको बता दूं कि ये जितने भी गोल हुए हैं थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में, गोवा के पास मौका, गोवा के खिलाड़ी स्ट्राइकिंग सर्कल में, बहुत सुनहरा मौका है इस बीच, डिफेंस को सेटल होने का मौका, लेकिन बेहतरीन डिफ्लेक्शन,
शानदार पुश किया और हल्की सी स्टिक से टकरा करके गेंद सीधे गोल पोस्ट के अंदर। गोवा क्या शानदार निगाह से निगाह मिलाकर चुनौती देती हुई टीम, जबरदस्त हॉकी दिखाते हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। गोवा की टीम ने भी अपने प्रदर्शन को बेहतरीन तरीके से इस समय जारी रखा है और बराबरी के तमाम इस समय वापसी की अगर बात करें कोशिशों को तलाश रही है। जबरदस्त तरीके से गोल के मुकाबले में अब काफी क्लोज आ गए हैं। अब सिर्फ 3-2 यानी कि 1 गोल का अंतर है इस समय। 1 गोल का अंतर ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है। अगर बात करें कभी भी 1 गोल का अंतर अगर बात करें ख़त्म की जा सकती है ना होगा इस समय। क्या बेहतरीन मुकाबला इस समय देखने को मिलता हुआ। इस अंदाज में ये मैच आगे बढ़ रहा है, वो रोमांचक करने वाला मैच के नज़रिए से ज़्यादा वक्त शेष नहीं है और कमाल की ये मेज़बानी ज़बरदस्त तरीके से हॉकी की झलक यहाँ पर नजर आ रही है। आखिरी 5 मिनट 53 अब बात करें 31 सेकेंड्स के आसपास का खेल शेष। गोवा की टीम ने भी वापसी के तमाम अपनी उम्मीदें जगाए हुए बहुत ही बढ़िया तरीके से इस समय प्रयास उनके द्वारा किया जाता हुआ और क्या शानदार कमबैक की झलक यहाँ पर नजर आई है। क्वीक आकर के इस समय गोल किया, पिछला गोल आया है साहिल प्रमोद, इन्होंने फील्ड गोल किया। मिडफील्ड में खेल होता हुआ देखना होगा इस समय। गोवा के पास बॉल नियंत्रण, कोशिश किया खूबसूरती के साथ इस फ्लाइट से आगे बढ़ने की कोशिश, प्रयास देखना होगा किस तरीके से और कितना कारगर यहाँ देखने को मिलता हुआ। और 5 मिनट से कम का खेल शेष। बंगाल की टीम अपना पहला मुकाबला जीत कर आई है। गोवा को पता है कि यह मुकाबला जो अटका है स्ट्राइकिंग सर्कल में गोलकीपर के लिए थोड़ी सी मुश्किल की स्थिति यहाँ पे। बहुत ही शानदार तरीके से डिफेंस ने अपना काम किया उस टच में से बॉल को क्लियर करते हुए। अंपायर से जाकर बात कर रहे हैं यहाँ पे थोड़ी सी अगर बात करें हम थैंकफुल हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर और साथ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई का हॉकी इंडिया जो लगातार और उड़ीसा जो हॉकी को लगातार प्रमोट करते हैं, जो सपोर्ट मिलता है और खूबसूरत ये मैदान चेन्नई जो लगातार तमिलनाडु स्टेट जो गोलकीपर को बदला है। यहाँ पर गोलकीपर चेंज किए गए और दूसरे गोलकीपर अगर बात नेहल गजेंद्र को लेकर आए हैं गोल पोस्ट के अंदर। ये देखना होगा इस समय क्या रणनीति होगी। सरदार देवजीत थे क्योंकि बंगाल ने अपना गोलकीपर बदला है, सरदार देवजीत को लेकर आए हैं इस समय। बंगाल के पास मौका रहेगा खास करके अगर देखें टाइम को थोड़ा किल कर सकते हैं, थोड़ी लीड में है और गेम के पेस को स्लो डाउन करना इनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है। राइट फ्लैंक से हाई प्रेस पे अच्छी कोशिश, वक्त धीरे धीरे निकलता हुआ मुकाबला बेहद दिलचस्प इस समय। क्या रणनीति रहेगी इस समय रिव्यू की मांग कर रहे हैं बंगाल के खिलाड़ी जहाँ मौजूद हैं रोशन कुमार की। देखना होगा क्या मांग रहे यहाँ पे, ये देखना बहुत दिलचस्प स्टेप है। शानदार तरीके से ये मुकाबला इस समय देखने को मिलता हुआ, खेल को शुरू होता हुआ। आइए निर्णय का इंतजार करते हैं और इससे जरा आता है इस वक्त। दोनों ही अंपायर की अगर बात करें, अंपायर हैं राजीव एस और साथ के पामी शेट्टी। स्कोरिंग जज की भूमिका में है दिनेश और टाइमिंग जज हैं इस वक्त शमीर। रिजर्व अंपायर सजल एनबी और साथ ही साथ विक्रम डी जो टेक्निकल ऑफिसर हैं। क्या रणनीति रहती है, क्या डिसीजन आता है, ये देखना बहुत अहम विषय है। मुकाबला बहुत ही दिलचस्प है, शानदार हॉकी की झलक। इसके बाद भी एक बड़ा मुकाबला खेला जाएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ जहां हॉकी हिमाचल और हॉकी तेलंगाना आमने सामने होंगे। उस मैच में हमारे साथ शमीम आलम सर सीनियर कमेंटेटर और उनके साथ में मयूर जी और पूरी हमारी प्रोडक्शन टीम। इस तरह शानदार तरीके से ये मुकाबला इस समय देखने को मिलता हुआ। बेहतरीन रोमांच के बीच बिलाल निर्णय का इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से। देखना होगा क्या निर्णय आता है इससे डिसीजन जो भी अगर बात करें
बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये मुकाबला अभी तक के घटित हो रहा है। दोनों ही शुरुआती दोनों क्वार्टर पे हाफ मिस रहा था, लेकिन कल्पना कीजिए कि तीसरे और चौथे हाफ में ये गोल हुए हैं। अभी तक ओवरऑल जो 5 गोल हुए हैं तीसरे और चौथे हाफ में गोल होने का, ये अगर बात करें ये सिलसिला जो जारी हुआ, सिलसिला लगातार जारी रहा और बेहतरीन हॉकी की झलक अगर बात करें देखने को मिला इस वक्त। कमाल का ये मुकाबला, रोमांचित करने वाले क्षण, काफ़ी लंबा इंतज़ार अगर बात करें देखने को मिलता हुआ इस डिसीजन को लेकर के। इंतज़ार करेंगे हम सब। पेनल्टी कॉर्नर दे दिया गया है, पीसी इस समय दी गई है आखिरकार बंगाल के पक्ष में, और देखना होगा इस समय बंगाल के ये पक्ष में पेनल्टी कॉर्नर मिलता हुआ इस समय, और देखना होगा क्या पेनल्टी कॉर्नर को कन्वर्ट करेंगे गोल के रूप में और यहाँ से लीड को और बड़ी कर पाएगी टीम। देखना होगा दिलचस्प समय किया, स्टॉप ट्रैक, खूबसूरत शानदार बेहतरीन ये गोल, एक और बंगाल की टीम पूरी तरीके से इस मुकाबले में अपनी शानदार प्रदर्शन करती हुई लाजवाब तरीके से इस मैच में आइए नजर डालते हैं। खूबसूरत ये क्या प्रयास किया था, दूसरे एंगल से देखते हैं कितना शानदार कैमरा एंगल, दो अलग अलग एंगल से जैसा कि आपने देखा इसे शानदार गोल को। मुकाबला पूरी तरीके से अगर देखें बंगाल की टीम अब लीड बना चुकी है, 3 मिनट से कम का खेल से 4-2 की लीड इस समय बंगाल के पास। मैच पे पूरी तरीके से शिकंजा कस लिया इस समय इस टीम ने, शानदार तरीके से शिकंजा कसा है, बेहतरीन अंदाज में यह मुकाबला इस वक्त घटित होता हुआ। और कमाल का ये गोल देखें, शुभम पात्रा टीम की कैप्टन के द्वारा पेनल्टी कॉर्नर को कन्वर्ट किया जर्सी नंबर 2 ने शुभम पात्रा का ये लाजवाब गोल। और वक्त धीरे धीरे निकल रहा है, गोवा के लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ती हुई। गजब की हॉकी, भारतीय हॉकी जो स्किल के लिए जानी जाती है अपनी, और वही स्किल दोनों टीमों ने दिखाई है। गोवा ने भी ज़बरदस्त संघर्ष किया है, वाकई में हॉकी की झलक इतनी बेहतरीन लीग स्टेज के इस मुकाबले में। भले ही बंगाल 4-2 की लीड में ज़रूर है, लेकिन गोवा ने आखिरी दम तक संघर्ष दिखा रही है टीम और लड़ने की क्षमता नजर आई है। गोवा के लिए साहिल प्रमोद और अंश अंकुश के द्वारा गोल किया गया, लेकिन वहीं अगर बात करें मुन्ना कुमार, शिवम रविदास, जितेंद्र रजक और शुभम पात्रा, ये 4 गोल स्कोरर हैं। पहला गोल 37वें मिनट में, दूसरा 32वें में, तीसरा 47वें में, चौथा गोल 49वें मिनट में आया और पांचवा 54वें और छठा गोल आया है 57वें मिनट में। यानी कि अब मुकाबले में 1 मिनट 28 सेकंड के आसपास का खेल शेष, वक्त ज़्यादा शेष नहीं है और मैच में पूरी तरीके से बंगाल जीत की तरफ बढ़ती हुई टीम इस वक्त। बंगाल के लिए अगर बात करें जो इनके कोच में डॉक्टर शाह, तारीफ करनी होगी इनकी, और स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर अगर बात करें पहुंचने की कोशिश, डिफेंस के लिए थोड़ी सी मुश्किल स्थिति, दोनों ही फ्लैंक यूज करके लगातार यहाँ पे प्रयास होता हुआ। इस बीच आखिरी मिनट से कम का खेल शेष इस समय, आखिरी कुछ सेकेंड 56 सेकेंड के आसपास। गोवा के खिलाड़ी के पास बॉल कंट्रोल मिडफील्ड में, गोवा के लिए भी बहुत अच्छा कार्य किया दिलशाद अली जैसे खिलाड़ियों ने। जर्सी नंबर 8 की भी अंश अंकुश की तारीफ करनी होगी, साहिल प्रमोद एक और बेहतरीन के लिए लेकिन हिट लिया इस बीच स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर। मौका यहाँ पे 1-1 की स्थिति में नैरो एंगल से थोड़ा सा गोल पोस्ट में रखने की गोलकीपर प्रतीक गुप्ता के लिए लगातार मुश्किलें पैदा कर रहे हैं खिलाड़ी। आए नजर आ रहे इस बीच के प्रयास उनके द्वारा एंगल को ब्लॉक करने का प्रयास जैसे नंबर 12 के द्वारा चेतन रामाकृष्णा मौजूद है। वक्त निकल रहा है धीरे धीरे इस समय, गोवा से मुकाबला दूर जाता हुआ और एक और पेनल्टी कॉर्नर मिल गई है बंगाल को। बंगाल पूरी तरीके से इस मैच में अपनी जीत की तरफ अग्रसर आई है। क्यों ये पेनल्टी कॉर्नर दिया गया नजर डालते हैं, क्योंकि फुट में टकराई वहाँ पे स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर। स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर खिलाड़ी के फुट में अगर बॉल टकराती है उससे पेनल्टी कॉर्नर के तौर पे दिया जाता है।
ट्रांसमिट हुई है और वहाँ पे जर्सी नंबर 9 जा रहे हैं इंजेक्शन के लिए। जर्सी नंबर 9 की जिक्र करें जहाँ बंगाल के लिए शिवम रविदास शानदार खिलाड़ी हैं। इंजेक्ट किया, स्टॉप, थोड़ी वेरिएशन, लेकिन इस बार ठीक तरीके से अगर बात करें गोल पोस्ट के अंदर नहीं रख पाए। वक्त अब्दुल अपनी आखिरी सांसें लेता हुआ चौथे क्वार्टर और इस मैच का बंगाल के लिए कभी भी हुटर की आवाज आ सकती है। जी हाँ, हुटर की आवाज। ये मुकाबला अपने नाम किया है बंगाल की टीम ने। 4-2 से शानदार जीत अर्जित की है बेहतरीन अंदाज में। 4-2 के साथ ये मुकाबला, इसमें गोल स्कोर देख सकते हैं बंगाल के खिलाड़ी मुन्ना कुमार हो, चाहे बात करें शिवम रविदास, हितेन रजक और शिवम पात्रा। ये स्कोर लाइन हॉकी बंगाल 4, हॉकी अगर बात करें गोवा 2। इस शानदार 15वीं हॉकी इंडिया बात करें सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप की और देख सकते हैं हाइलाइट्स, की मोमेंट्स। ये टॉमाहॉक बहुत शानदार तरीके से इस समय प्रयास गोवा के खिलाफ बंगाल शुरुआत से ही कप्तान शिवम पात्रा की कमाल की रणनीति और रणनीति इम्प्लीमेंट करते नजर आए। अच्छे अटैक्स बनाए शुरुआत में ही, खूबसूरत स्ट्रैटेजी इनकी रही। शुरू के 2 क्वार्टर जरूर गोल रहित रहे, लेकिन उसके बाद तीसरे क्वार्टर में इस तरीके से गोल किए गए और मुन्ना कुमार ने इस सिलसिले की शुरुआत की थी और इस गोल करके काफ़ी अच्छे पेनल्टी कॉर्नर्स भी बनाए और कन्वर्जन जिस तरीके से उनके द्वारा देखने को मिला वो बहुत प्रशंसनीय था। और यहाँ पे प्रयास जिस तरीके से शानदार गोल था जर्सी नंबर 8 अंश के द्वारा, और ये पिछला गोल जो आप देख सकते हैं शिवम रविदास के द्वारा, लाजवाब गोल बेहतरीन अंदाज में क्विक आए और जर्सी नंबर 15 का असिस्ट देखने लायक था, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाए और बेहतरीन रिबाउंड पे क्या ज़बरदस्त गोल दिखाया। और ये कमाल की गोल के साथ ही ये गोल किया था गोवा ने, और गोवा के लिए साहिल प्रमोद ने शानदार गोल किया। और आखिरी गोल ये पेनल्टी कॉर्नर को खुद कप्तान ने तब्दील किया गोल के रूप में शिवम पात्रा। बंगाल 4-2 से ये जीत की 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2 में जीत चुकी है बंगाल इस पुल में, और अब बहुत अच्छी स्थिति उनकी हो गई है। जुड़े रहिए, कहीं मत जाइए, एक और बड़ा मुकाबला आपका इंतजार करेगा के पास। उस मैच में हमारे साथ सीनियर कमेंटेटर जुड़ेंगे शमीम आलम जी, और उनके साथ होंगे मयूर जी इंग्लिश में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जैसे ही अगले मैच की शुरुआत होगी आप तक लाइव एक्शन पहुँचाएंगे पूरे प्रोडक्शन टीम के।
रुकेगी नहीं, कभी बुझेगी नहीं अपनी विजय की जलती मशाल। ये वादा है इस मिट्टी से, इस मिट्टी की संतानों का। अब कुछ भी हो कब होगा नहीं, ये हौसला नौजवानों का। जन जन के सपनों की, भारत के सम्मान की, जय जय हो, जय जय हो, जय हो हिंदुस्तान की। Chief guest of today's match is Mr. 𝐬𝐻, international volleyball player and chairman of the Tamil Nadu Volleyball Committee. Please rise for the national anthem. किशन स्टेडियम से मैं शमीम आलम अपने साथी कमेंटेटर मयूर बरुआ के साथ आपका स्वागत करता हूं। ये बताते हुए कि आज शाम के सत्र का दूसरा मुकाबला यहां पर हिमाचल और तेलंगाना के बीच होने के लिए जा रहा है। हिमाचल का लाइनअप है मनप्रीत यादव, सुदर्शन नाश, अमन, अजय, संजीव सिंह, ऋतिक, चंदन भारद्वाज, भवनप्रीत सिंह, नितिन कुमार, सिद्धार्थ, कौशल, रोहित। जबकि तेलंगाना की तरफ से खेल रहे हैं अखिल गोगला, विकास, पुलिनीति, साईराम चौहान, राक्षम है कप्तान, जगजीवन राम, नैतिक चांद, प्रभजीत सिंह सरदार, हर्ष कुमार, अमित दयाल, लोकेश, राम शांगा, प्रमोद शेजमानी ये था। और देख सकते हैं आप यहाँ पर इस वक्त दोनों टीम के खिलाड़ी, ये तेलंगाना की टीम है और ये है टीम हिमाचल की। तेलंगाना हॉकी टीम देख सकते हैं आपका ग्रीन रंग, नीला रंग और सफेद रंग का मिश्रण, जबकि यहाँ पर लाल ये गुलाबी रंग की जर्सी में ऊपर में है, जैकेट में यहाँ पर हिमाचल की टीम। मैं बता दूं हिमाचल को केरला ने 1 के मुकाबले 6 गोल से पराजित किया था, जबकि मणिपुर ने तेलंगाना को 1 के मुकाबले 7 गोल से पराजित किया था। परीक्षित शिवाज खेल के नायक है, उमेश भिन्न है खेल के आज निर्णायक, यहाँ पर पुष्पैक के साथ खेल की शुरुआत। बहुत बहुत शुक्रिया विकास और मयूर, जिनके मधुर आवाज में आप जो बंगाल और गोवा के बीच मुकाबला हुआ उसकी आंखों देखा विवरण सुन रहे थे। और मैं शमीम आलम मयूर बरुआ के साथ चलिए आपको लिए चलता हूँ खेल की दुनिया में, हॉकी की दुनिया में ले चलता हूँ और लिए चलता हूँ आपको खूबसूरत स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, चेन्नई का मेयर राधा कृष्ण स्टेडियम।
यहाँ पर मुकाबला शुरू हो गया है। यहाँ पर हिमाचल, ये हिमाचल के खिलाड़ी जैकेट पहने हुए हैं, कहा जाए तो गुलाबी जैकेट, जबकि उनसे ठीक दाईं तरफ है तेलंगाना की टीम। ये दोनों टीमें अपना पहला मुकाबला, आरंभिक मुकाबले को हार चुकी है, दूसरे मुकाबले में जीत की तलाश होगी। अभी आपने देखा बंगाल ने गोवा को 2 के मुकाबले 4 गोल से पराजित किया। बंगाल अच्छा प्रदर्शन कर रही है गत कुछ सालों से, और बंगाल अपना दोनों मुकाबला को जीती। तो इस तरह से कहा जाए तो बहुत आज परिस्थिति है यहाँ पर करो या मरो की स्थिति। यहाँ पर हिमाचल के लिए भी बर्फों के ढका प्रदेश हिमाचल, और दूसरी तरफ से एक गर्म प्रदेश कहा जाए तेलंगाना। तेलंगाना एक ऐसा प्रदेश है, ऐसा राज्य है जो हैदराबाद, यहाँ पर आंध्र प्रदेश से निकला, आंध्र प्रदेश से कट के निकला तेलंगाना। तो स्थिति इस वक्त यहाँ पर सीट मिलता हुआ तेलंगाना को हिमाचल के ऊपर। छपास राइफल से इस बार स्टैकिंग सबके अंदर घुसते हुए यहाँ पर तेलंगाना के खिलाड़ी एक मौके को तलाश रही है। तेलंगाना की टीम पहला क्वार्टर में झटका देने के लिए चल रही है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश को। देखिए रिप्ले में किस तरह से तेलंगाना के अमित दयाल बॉल लेके निकले। अमित दयाल ने हिट जरूर लगाई, लेकिन यहाँ गोलकीपर हिमाचल के तैयार थे, करण, उनके पैरों से लगती हुई गेंद की बाहर। तो यहाँ पर हिट स्कूप किया यहाँ पर हिमाचल के खिलाड़ी ने लेफ्ट फ्लैंग में अपने लेफ्ट विंगर के लिए बॉल लेके आगे बढ़ने की कोशिश, वहां पे पहुंच चुके हैं तेलंगाना के भी खिलाड़ी। पहला क्वार्टर का खेल शुरू हो गया है। मैं बता दूं यहाँ पर टेम्परेचर आज जो चेन्नई में है 26 डिग्री सेल्सियस है, मीन मैक्सिमम 36 डिग्री यहाँ पर जाता है आज, लेकिन ह्यूमिडिटी है 95%, 5% यहाँ पे संभावना है बारिश की। तो इसका मतलब बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। और 18 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा, तेज रफ्तार से यहाँ पर है आज हवा की रफ्तार। यहाँ पर पेनल्टी कॉर्नर की सलाह, तो ऐसी कोई व्यवधान नहीं है। हवा भी बहुत ज़्यादा तेज नहीं चल रही है, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है यहाँ पर स्टेडियम के ऊपर। तो आज मौसम बिल्कुल साफ है, सुनहरी धूप खिली हुई है स्टेडियम के अंदर। तो इस वक्त लेकिन खतरे का बादल मंडरा रहा है हिमाचल के ऊपर। पेनल्टी कॉर्नर अर्जित करती हुई तेलंगाना की टीम, शुरुआती झटका देने की तैयारी, हिमाचल को इंजेक्शन की तैयारी, इंजेक्ट किया गया, बॉल को रोका गया और यहाँ जोरदार हिट यहाँ पर गोलकीपर ने बचाया। यहाँ पर अच्छा बचाओ, लॉन्ग कॉर्नर हिटिंग का इशारा यहाँ पर तेलंगाना के लिए खेल के निर्णायक का। 2 निर्णायक परीक्षित शिवाच और दूसरी तरफ से भिन्न ने अलग अलग क्षेत्र में, मैदान के 2 क्षेत्र में मैच को संचालित कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत मौसम और इस स्टेडियम बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, विहंगम दृश्य है इस स्टेडियम के। एक छोर में आप देख सकते हैं लंबे लंबे हरे पेड़, ऊंची ऊंची इमारतें भी नजर आ रही थी। देख रहे थे जिस वक्त यहाँ पर दोनों टीम के खिलाड़ी बीच मैदान थे और राष्ट्रगान हो रहा था, उस समय छायांकन किया जा रहा था, हमारी कैमरा टीम दिखा रहे थे। तो वहाँ पर बहुत अच्छा विहंगम दृश्य है, कहा जाए मनोहर दृश्य है इस मैदान का। क्रिकेट मिलता हुआ तेलंगाना को, स्कूप किया, ऊंची उड़ती हुई गेंद साथी खिलाड़ी के लिए और को नियंत्रण करने की कोशिश। तेलंगाना के खिलाड़ी लेफ्ट फ्लैंक से अटैक करती हुई, तेलंगाना के खिलाड़ी बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए बहुत तेज गति से यहाँ पर मोतीरामपुरम और वहाँ पर पेमेंट फ्री हिट मिला हिमाचल को। हिमाचल वेट एंड वॉच की भूमिका में तेलंगाना लेकिन शुरुआती अटैक करना शुरू कर दिया है हिमाचल के ऊपर। बहुत तेज हॉकी चलता हुआ इस वक्त बैंक में से टैकिंग सर्किल के अंदर घुसने की कोशिश, लेकिन अच्छा इंटरसेप्ट वहाँ पर हिमाचल के खिलाड़ी का, गेंद गई बाहर टच लाइन का। अपने क्षेत्र से लगभग 23 मीटर की दूरी से रेखा से राइट फ्लैंक से इस वक्त सीट मिलता हुआ हिमाचल को। अच्छा पास बढ़ा दिया है, नबातुल्ला पास स्कूप किया गया यहाँ पर हिमाचल के खिलाड़ी ने अपने राइट विंगर के लिए, लेकिन वहाँ पे राइट विंगर के खिलाड़ी पीछे रह गए। फिर हिट मिलता हुआ यहाँ पर 23 मीटर की रेखा पर बाईं छोर से यहाँ तेलंगाना को।
सरकार दिया रक्षाबंधन के खिलाड़ी के लिए। तेलंगाना 0 और यहाँ पर हिमाचल 0 मिलता हुआ यहाँ पर तेलंगाना को। इस वक्त अभी तक जो खेल चला लगभग 6 मिनट का खेल हो गया है, कोई भी टीम गोल कर नहीं पाई है। तेलंगाना की टीम एडवांस करती हुई 10 मिनट के रेखा के पास डॉटेड लाइन के पास पहुंच गई। यहाँ पर स्ट्राइकिंग सर्कल खतरा बनता हुआ यहाँ पर हिमाचल के ऊपर बहुत तेज आक्रमण करती है। यहाँ तेलंगाना की टीम बहुत तेजी के साथ बॉल लेकर आगे बढ़ गए थे। यहाँ पर दिल को धड़का देने वाली हमला कहा जाए तेलंगाना के खिलाड़ियों के द्वारा। इसको ऊंची उठी हुई गेंद, बहुत अच्छा रिसेप्शन यहाँ पे जगजीवन अथराम के द्वारा तेलंगाना के खिलाड़ी बॉल को बढ़ा दिया साथी खिलाड़ी के लिए। बाएं फ्लैंक से अटैक करने के लिए चाह रही है यहाँ पर तेलंगाना की टीम। की कोशिश यहाँ पर अभी भी तेलंगाना के खिलाड़ी के पास बॉल डॉटेड लाइन के पास, हिमाचल के डॉटेड लाइन के पास फीट मिलता हुआ, दबाव बढ़ता हुआ इस वक्त यहाँ पर हिमाचल के ऊपर। स्ट्राइकिंग सर्किल के ऊपर अच्छा पास बढ़ा दिया साथी खिलाड़ी के लिए। तेलंगाना की टीम बॉल लेकर आगे बढ़ती हुई स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर पास, बहुत अच्छा पास बढ़ाया था। उनके साथी खिलाड़ी बॉल को ले नहीं पाए स्टिक के ऊपर, अन्यथा खतरा बनता। बॉल लेके किस तरह से निकल रहे हैं अमित दयाल, ये तेलंगाना के हैं। बॉल को बढ़ा दिया था वहां पर बाएं फ्लैंक में अपने साथी खिलाड़ी के लिए हदरियान लॉरेंस के लिए। हदरियान लॉरेंस बॉल को ले नहीं पाए। स्थिति 0-0 है। हिमाचल प्रदेश 0 तेलंगाना 0। कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई है अभी तक, जहां तक सवाल है। आज ये 16वां मुकाबला हो रहा है मैच शेड्यूल का, 16वां मुकाबला। और मैं बता दूं ये मुकाबला हो रहा है डिवीजन बी का मुकाबला चल रहा है। डिवीजन बी का पूल बी का मुकाबला चल रहा है। इस पूल में है केरला की टीम, मणिपुर, हिमाचल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की टीम। 5 टीमें इस पूल में हैं। ये दोनों अपना दूसरा मुकाबला खेल रही है, दोनों टीमें, हिमाचल भी और तेलंगाना भी। लेकिन दोनों टीमें अपनी आरंभिक मुकाबले को हार चुकी है। हिमाचल को केरला ने हराया था 1 के मुकाबले 6 गोलों से, जबकि तेलंगाना को मणिपुर ने 1 के मुकाबले 7 गोलों से पराजित किया था। अपनी छत में खेलती हुई इस वक्त तेलंगाना के खिलाड़ी ने स्कूप किया है ऊंची उठी हुई गेंद, बहुत अच्छा पास। गेंद चलाई है इस वक्त हिमाचल के खिलाड़ी के पास, बॉल सीधा पास मध्यरेखा के पास, साथी खिलाड़ी की तलाश। अभी भी हिमाचल के खिलाड़ी के पास बॉल है, बाएं फ्लैंक में बढ़ा दिया है, बहुत नापातुला पास, गेंद के अंदर गति, गेंद गई बाहर यहाँ पर टच लाइन का। स्थिति 0-0। 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो यहाँ पर चेन्नई के मेयर राधा कृष्णन स्टेडियम में चल रहा है। ये बहुत ही नामी ग्रामी स्टेडियम है, कहा जाए अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है। कई अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले यहाँ पर खेले गए हैं। तो मैं बता दूं इस साल 28 नवंबर से 25 दिसंबर तक पुरुषों का जूनियर विश्व कप हॉकी का भी आयोजन होगा चेन्नई में। तो चेन्नई 2 बार एशियन कप हॉकी का भी आयोजन कर चुका है। यहाँ पर कई अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले जा चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम, ब्लू टर्फ बिछा हुआ है। और यहाँ पर तेलंगाना की टीम अटैक करते ऊपर पहुंचने की तो स्थिति यहाँ पर 0-0 है। अब बाएं तरफ से अटैक करने की कोशिश यहाँ पर और गिर पड़े निकालने की कोशिश यहाँ पर तेलंगाना के खिलाड़ी के पास बॉल, दाएं फ्रंट से हमला बोलती हुई तेलंगाना की टीम 22 मीटर की रेखा के बाद बहुत अच्छा पास दिया ना पतला पास से स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर पहुंच गया है तेलंगाना के खिलाड़ी और टॉम हॉक यहाँ पे लगाने की कोशिश की गई थी, लेकिन गेंद पहले एडवांस हो गई। खेल के निर्णायक इशारा, आज मैं बता दूं 2 अंपायर परीक्षित शिवाज और उमेश भिन्ने, उनके ऊपर जिम्मेवारी है इस मुकाबले को संचालित करने की। आगे बढ़ने की कोशिश, अच्छा इंटरसेप्ट तेलंगाना के खिलाड़ी के पास बॉल, मध्यरेखा को क्रॉस करते हुए बाएं फ्लैंक में एक हल्का पास बढ़ा दिया है, नपतला पास साथी खिलाड़ी को यहाँ पर हरिद्वान लॉरेंस के लिए। लॉरेंस ने यहाँ पे
हाई फ्लैंग में एक समानता पर बढ़ा दिया, धीरे धीरे बॉल लेके निकलने की कोशिश, तेलंगाना के खिलाड़ी पहुंच गए हैं स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर, खतरा बढ़ता हुआ यहाँ पर हिमाचल के ऊपर, बहुत तेज आक्रमण और ये पेनल्टी कॉर्नर का इशारा। अंततः यहाँ पर पहला क्वार्टर में यहाँ पे पहला पेनल्टी कॉर्नर अर्जित किया तेलंगाना ने। खतरे का बादल मंडराता हुआ यहाँ पर हिमाचल के ऊपर। देखिए किस तरह से बॉल लेके अमित दयाल बढ़ रहे थे, गलत तरीके से रोका गया और निर्णायक ने बिना कोई समय गंवाए सीधा पेनल्टी कॉर्नर अवार्ड कर दिया है। पेनल्टी कॉर्नर हैज बीन अवार्डेड इन फेवर ऑफ तेलंगाना। फायदा उठा पाती हूँ ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इंजेक्शन की तैयारी तेलंगाना की तरफ से, इंजेक्ट का बॉल को रोका गया, बढ़ा दिया गया है और ये तेलंगाना की तरफ से क्या खूबसूरत गोल बनाया तेलंगाना के खिलाड़ियों ने। पेनल्टी कॉर्नर को देखिए आप रिप्ले में, ये गेंद गई यहाँ पर अमित दयाल के पास और अमित दयाल ने निशाना सीधा साधा। देखिए अमित दयाल खिलाड़ी को चकमा दिया, दो खिलाड़ियों के बीच में से गोलकीपर को चकमा देते हुए गेंद सीधा गई गोल पोस्ट के अंदर, बिल्कुल बंदूक की गोली की तरह स्टिक से गेंद निकली, अब बिजली की तरह यहाँ पर गोल पोस्ट के अंदर समा गई। तो इस तरह से अमित दयाल ने पहला गोल डाला है यहाँ पर तेलंगाना के लिए। तो अब तेलंगाना 1 हिमाचल 0। लगभग 12वां खेल के 12वां मिनट में गोल डाला है अमित दयाल ने। इस तरह से एक बार फिर अटैक करती हुई यहाँ पर तेलंगाना की टीम के खिलाड़ी, लेकिन पीछे से आए वहाँ पर हिमाचल के खिलाड़ी, एक खिलाड़ी को ड्रिप करने की कोशिश लेकिन गेंद से छिन गई। एक बार फिर तेलंगाना के खिलाड़ी को सफलता मिली, अटैक करती हुई राइट फ्लैंक से ज़्यादा हमला बन रहा है। लेकिन क्या खूबसूरत गोल अमित दयाल ने बनाया, इसकी तारीफ करनी पड़ेगी। बेहतरीन पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील किया गया। वेरी ब्यूटीफुल कन्वर्सन ऑफ पेनल्टी कॉर्नर इनटू गोल बाय अमित दयाल। दर्शनीय गोल अमित दयाल के द्वारा। बीच मदरका के पास यहाँ पर हिमाचल के खिलाड़ी ने बॉल को बढ़ा दिया अपने साथी खिलाड़ी के, राइट फ्लैंक से काउंटर अटैक करने की तैयारी यहाँ पर हिमाचल, लंबा हिट, लेकिन कोई खिलाड़ी असिस्ट करने के लिए वहाँ पर मौजूद नहीं, गेंद गई बाहर गोल लाइन का। 2 मिनट 40 सेकंड का समय लगभग बचा हुआ है यहाँ पर पहला क्वार्टर का। बहुत तेज गति का हॉकी चलता हुआ यहाँ पर चेन्नई के मेयर राधा कृष्ण स्टेडियम में। परिस्थिति इस वक्त यहाँ पर हिमाचल के विरुद्ध चल रहा है, जबकि तेलंगाना की टीम ने 1 गोल करके अपनी स्थिति को कुछ हद तक मजबूत जरूर कर दिया है। फिलहाल यहाँ पर सर्किल के ऊपर फील्ड मिलता हुआ हिमाचल को, लेकिन गेंद हिमाचल के खिलाड़ी से छीन गई। बहुत अधिक समय तक हिमाचल के खिलाड़ी बॉल को नहीं रख पाते हैं अपने पास। अच्छा इंटरसेप्ट करने की कोशिश यहाँ पर हिमाचल के खिलाड़ी के द्वारा, लेकिन तेलंगाना के खिलाड़ी बहुत संतुलित तरीके से खेल रहे हैं। बिल्कुल जिस तरह से कहा जाता है पूर्व नियोजित तरीके से यहाँ पर हमला कर रही है तेलंगाना की टीम हिमाचल के ऊपर। और लेकर आगे बढ़ते हुए 23 मीटर की रेखा के बाद पहुँचते हुए पीछे सरका दिया तेलंगाना के खिलाड़ी ने, और अब एक समान कर पास खिलाड़ी को डील करने के बाद बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए खतरा बनता हुआ स्ट्राइकिंग सर्किल के ऊपर यहाँ पर मौजूद दूसरा गोल होता हुआ यहाँ पर तेलंगाना की तरफ से हिमाचल के ऊपर। देखिए रिप्ले में किस तरह से गोल हुआ। अमित दयाल बॉल लेके आगे बढ़ रहे हैं, अमित दयाल बढ़ा दिया और ये गेंद गई गोल पोस्ट के अंदर। तो दूसरा गोल होता हुआ यहाँ पर तेलंगाना की तरफ से आपने देखा ये गोल किया गया शाहराम चौहान के द्वारा, जर्सी नंबर 4 के द्वारा। अमित दयाल ने बढ़ाया था शाहराम चौहान के लिए, खूबसूरत गोल बनाया शाहराम चौहान ने अपनी टीम के लिए। तो यहाँ पर स्थिति खेल आखिरी मिनट में लगती है। देखिए लड़ती है आपको सब जूनियर खिलाड़ी, अब फोकस किया जा रहा था जर्सी नंबर 4 के ऊपर। शाहराम यहाँ पर चौहान थे जिन्होंने दूसरा गोल किया। तो स्थिति यहाँ पर 2-0 संभल के खेलना पड़ेगा हिमाचल को, बहुत ठंडे दिमाग से खेलना पड़ेगा। हालांकि ठंडा प्रदेश है हिमाचल कि खिलाड़ियों को बहुत ठंडे दिमाग से खेलना चाहिए, लेकिन परिस्थिति इस वक्त बिल्कुल उनका उल्टा चल रहा है। 2 गोल की बढ़त प्राप्त कर लिया है यहाँ पर तेलंगाना ने, और शुरुआती झटका दिया तेलंगाना ने पहला क्वार्टर में। अपनी स्थिति को बहुत अच्छा मजबूत कर लिया है।
फिलहाल हिमाचल के खिलाड़ी के पास बॉल, बद्रिका के पास काश्मीर खिलाड़ी की तलाश। तो बॉल को भेजा है यहाँ पर स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर, तो खिलाड़ी उनका स्टिक पे ले। ये है अमित दयाल, जैसे नंबर 10 आप देख रहे हैं, बहुत ही होनहार खिलाड़ी है, काफ़ी तेज स्ट्राइकर है ये अमित दयाल तेलंगाना का। और ये हुटर बजता हुआ इस बात का संकेत, यहाँ पर पहला क्वार्टर का समय खत्म हो गया। अब बाजी मारी यहाँ पर तेलंगाना की टीम ने। आज बता दूं मैं, आज का शेड्यूल में मात्र 2 खेल है। तो ये दूसरा खेल है। पहला खेल हुआ था बंगाल और गोवा के बीच, जिसमें बंगाल ने गोवा को 2 के मुकाबले 4 गोलों से पराजित किया। और अभी अभी यहाँ पहला क्वार्टर में 2 गोल की बढ़त प्राप्त कर लिया है तेलंगाना की टीम ने। हिमाचल 2 गोल से पीछे चल रही है। दूसरा क्वार्टर में क्या स्थिति बनेगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन दूसरे क्वार्टर के लिए हम आपको लिए चलेंगे अपने साथी कमेंटेटर मयूर बरुआ के पास। नाउ ओवर टू मयूर बरुआ। Hello and a very warm welcome to everyone. Welcome back to the second quarter of match number 16. Behind the mic, I'm Mayur Barwa. Thank you so much, Mr. Shami Malam. I'm sure everyone has loved what Mr. Alam had to go through the paces. 2 goals for Telangana hockey versus none to show for hockey Himachal Pradesh. From the left of Himalayas on to the south, it is like raining for the boys to come right from the top in the south. It will take some time, isn't it? Telangana hockey, they haven't lost any time. First quarter, 2 goals. And they will be now a serious contender to go for the defeat. But much time left here. Still a quarter remaining. After this, 2 more quarters remaining in the second half. So some time remaining here for Himachal Pradesh to try and make a comeback. Back again, a very fast-paced sport is hockey. By the time you realize, the second just goes by, finishes like a whip of quicksand. So they really have to now regroup, do the basics right. In violet and white are the team from Telangana. In pink and a touch of white are the team all the way from Himachal Pradesh. Right from the left, they're still trying to get inside the striking circle. Not easy versus Telangana hockey. The way they have played, they're still trying to prowl like a dangerous side. You can see the attack has been really good. That's what the first quarter has produced in a very diagonal line. Goalkeeper almost like a was trying to pick an insect out of the ground with just one hand. And now this is proving to be so very honest. Now it is shifting to Himachal Pradesh, the penalty corner opportunity. So can they just change their tune? Can they just make a difference? Because this might just be a chance for them to recreate what probably Telangana have done before. The instruction has been done. The referee going, it's like a broom, but it'll get just rebounded from the stick and wobbles a little bit up. The time is up. So a chance has just gone by. The scoreline still remains 0 for hockey Himachal Pradesh and 2 for Telangana hockey. A very good side. Both the teams have lost a match each. 1-6 and 1-7 scoreline for Telangana. It was versus Manipur 1-7.
And for Hockey Himachal, it was 1-6. So they'll look to reverse both the goals. Both the teams have just had one goal each in their first encounter on day number one. So they'll be looking to now change the favor and bring the tide really up to them. It won't be easy. And what a good match we had in the previous encounter, isn't it? 4-2 for Bengal. But again, hats off to the gameplay for the boys in green from GOANS Hockey. Brilliant. At one time, it was 3-2 inside the striking circle. Telangana. Nope. Just go out of a whim with the boys in pink. You seem like they are actually wearing a beep, like a beep color, the fluorescent green or like a pink, but it's actually the color of the jersey. Trying to circle, go through the defenses. It's a wrong pass onto the striking circle. It's a whip and it goes strikingly close towards the goal post. Oh, trying to look at the heavens. Where is the lady luck in the afternoon? Look at that. Just a small little touch, small little scoop. Went flying, but unfortunately evaded the goal post into the striking circle again. The boys in pink has the chance, gets rebounded probably from left of the goal post. The goalkeeper knows he probably might have made a mistake here. It seemed like he had lost an opportunity probably to come remotely closer to put his stick in the air, and that's the reason why he was a little dissatisfied with the kind of performance probably he was really hoping for from himself. But again, this will tell you the story too. For Telangana, still it remains none for Hockey Himachal Pradesh. They look to differentiate the cause. The ball goes out of bounds, but attacking hockey is being on display. A visible difference, I would say, from both the matches. Bengal versus Goa versus this Himachal Pradesh versus Telangana. Goa, they definitely showed how differently they were approaching this match today. Unfortunately, at the end, trailing by 2 goals to lose by 4-2, but still a very respectable victory, I would say, versus what they had versus Hockey Arunachal to lose by 0-4. But 10 to lose by 4-2 today is much more respectful, I would say, for GOANS Hockey. This is for Hockey Himachal Pradesh. From the right, can they shoot it up? Trying to get a circle, trying to mitigate any danger. But then there's an infringement. That's what the umpire is showing on the foot. The Hockey Himachal Pradesh gets the advantage to get a freebie with the stick from left to right. They are trying to almost get a half tomahawk from the right. But good stick in play, trying to break the defenses. 2 of them come to join Hockey Himachal Pradesh. Right from the corner, he's still there. He's trying to circle across into the halfway through. Can they get it? No. Telangana clever enough to get the attacking Hawking. It's almost like a counter-attack they're doing it, isn't it? There's sometime probably around 10-15 seconds right to the corner. Inside the striking circle, Telangana Hockey leading by 2. It's a good pass, trying to reverse through the front stick. Straight, reverse, front. But couldn't, unfortunately, flip the numbers from 2 to 3. Brilliant hockey. This is a scoop. Less than 10 minutes now remaining here. This is how the second just goes by so quickly. And this is something that all the teams will know how closely fought encounters will this be now. Exactly 9 minutes remaining by the clock now. It's so interesting how now they will try and cross the numbers off first, especially for Hockey Himachal Pradesh, with no goals to show as of now. The pressure is still double on them. From the left, the try is there for the Pink Army. From the left again. From the left, can just he pull it from a long distance into it? No, Telangana is much more astute and inclined to the conditions to put the stick right in the time and squeeze it out right from the corner to keep the scoreline remaining intact. The 2 for Telangana, 0 for Himachal Pradesh. Hot, humid here in the city of Chennai, in the state of Tamil Nadu. We are watching match number 16 of this 15th edition of the Hockey India Sub-Junior Men's National Championship. Very wonderful venue, isn't it? As I've mentioned before,
this state of Tamil Nadu has produced some good champions. A place which is breeding and smelling of different champions right from the yesteryears. If you look about the difference, but a huge nation to produce hockey, isn't it? Being from Olympics champions to Commonwealth Games, every stage of hockey will speak of champions coming from different corners of India. It's a very straight line, and because the sun is so blazing hot, you sometimes miss the trajectory of the ball also going by. There's a reason why I actually got blindfolded. Hockey Himachal Pradesh has a chance again, right from the center of the striking circle. Flew on the top of the crossbar. 7 minutes remaining. Himachal Pradesh is breathing fire, very different kind of fire this time versus the first quarter. Going along right past the center line. Lovely push. Lovely cross. And now gets the possession. Violet Army on the brawl right from the right center. It's a very good pass. But ping zone to zone. Two defenders. Infringement foul. Umpire says it has hit your leg. So let's just get it scooped up. It is scooped up. Will nicely held, puts on the ground, gets on the stick, on the ball. 6.5 minutes remaining in the second quarter. The striking circle, and the goalkeeper does very well to let it go by. It's some nomad is holding this game of why this has not been considered probably a goal. Which has come up because of the foul infringement. Telangana. An advantage, circling through, gets a nice stick at a very good time back past the center line. Hockey Himachal Pradesh going very well past the half of the center line now into the next zone from the territory where they can just force an attack and open their counter lines. A very good pass, and from the right, the striking, the goalkeeper is on. And a huge vacant area for Hockey Himachal Pradesh to try and draft the goal. It was a very good tomahawk from the right corner, but unfortunately, two of them, despite standing so close to the jaws of the goalpost, there you go. The goalkeeper just flew to his right by the time they could just put the stick and the goal proportionately. It was very late. The whistle also came in to break the bondage. The scoreline, almost 5 minutes now remaining here. The remains the same like the first quarter. 2 for Telangana, 0 for Hockey Himachal Pradesh. They would look to open this account. Don't know how much they would try to, but they have definitely shown of how this second quarter has been a little different for them, and that's why Telangana, how they've done in the first, they've not been able to counter too much, but attack is still there. It's a very good pass, nice scoop, and again will be joined two of the offenders, I would say, right from the right to the center. Gets a very good possession of the ball and get it all the way through. Three of the defenders are very much aligned to each other like a pyramid angle. They'll get the ball rolling much into their favor. They'll do very well if they can make it just remain at 2-0. But they would look to change this fortune onto the striking circle. Oh, very slow, very slow. Goalkeeper was there. Probably that's the reason why he got a little confused in his mind, because he needs to keep the pace along with the ball. Again, this angle difference will tell you, there you go. Probably a difference of 1 to 1.5 seconds. If he could have got a little more earlier, he could have probably tried to sneak the ball underneath the goalkeeper and then into the goal post. The scoreline still says the same. The story: 2 for Telangana, none for Hockey Himachal Pradesh. Less than 3.5 minutes now remaining for time of this match. This match number 16, the 15th edition of this Hockey India Sub-Junior Men's National Championship, played here in Chennai, in the state of Tamil Nadu. Brilliant conditions. And can the condition favor Hockey Himachal Pradesh? Squeezing it out right between three of the defenders, gets into the body. The ball goes out of bounds.
That's where the work of the match official becomes so important, isn't it? So close, and sometimes you feel yet so far. Less than 3.5 minutes now remaining from here on. Let's see what they can do from here on. It will be very interesting and very interactive. It will be absolutely wonderful to do it. Some prayers. And isn't it, sometimes you really need, you might be spiritual, you might be very religious, but whatever it is, you need to believe the force to meet. And as the prayers go by from behind, I'm sure there will be so much of untouched and a power behind who can make this going. And now it's advantage. It's a strategic corner advantage for Himachal Pradesh. Can they flip the page from 0 to 1? Are they getting ready to change their fortunes? Can they take a leaf out of the book of how Goa did? They were trailing by 1 goal. They were 1-0, 1 Bengal. Then Goa made it 1-1. They eventually made it 4-2, but they were 3-2. There's the insertion. Where's the direct flick coming? It's a flyby! Oh, phew! If your flew just not fled, it was not down the ground. Unfortunately, it was not heading straight off where it should be. This camera angle will give you the clear picture. I feel so. There is a deflection probably of the hockey stick. That's the reason why it went over the crossbar. If it was not, it would have been very interesting to see how the goalkeeper would have set precedence. And just less than 2 minutes remaining here for the blow of the whistle. And all this in association of the different agencies. Very special thanks to the government of the Ministry of Youth Affairs and Sports, Authority of India, and also to the Association of Tamil Nadu for getting this solution, this tournament, this championship. What a tournament we're having, isn't it? We started day before yesterday. We'll be finishing on the 8th of August. By the time we finish, I'm sure we'll be having not only the cream of the teams, but the cream of the players of the sub-junior who will be cropping up someday. Hopefully, we'll be wearing the Indian colors, donning the Indian jersey. That's what they play for, the ultimate glory, isn't it? You might be having all the levels, you might be having all the statistics for yourself, you might be going for all the practices, you'll be playing in a different categories, different tournaments. But again, the ultimate sight of being drafted into the Indian colors is something which they always strive for, they always play for. And we just hope that we are seeing the best of the Indian hockey at the moment here, right in a picture. Just 30 seconds now remaining for the blow of the hooter signaling half-time. The equation hasn't changed in the scoreline. It still remains as it was in the first quarter. 2 for Telangana, 0 for Hockey Himachal Pradesh. Now you can see behind those are the workers. They also need to be appreciated of the conditions, isn't it? With the sprinkling of the water, the venue management, there's so many people who are really behind the scene. And the blow of the hooter, as I was praising all the co-workers, all the people getting involved, including the management. The hooter comes in half-time, and the scoreline is the same: 2 for Telangana Hockey, 0 for Hockey Himachal Pradesh. So you can just put in who have done probably the best of them, but these boys have definitely done much, but unfortunately it will remain the same. So we'll be back with the third quarter very soon. At halftime, it's 2 for Telangana Hockey, 0 for Hockey Himachal. At the third time, it will be the voice of our wonderful Indian commentator, Mr. Shamimalam, to take over. So stay tuned.
खेल इस वक्त शुरू होने के हुए। खेल के निर्णायक आज दो निर्णायक जो है परीक्षित शिवाच और उमेश भिन्ने मुकाबले को संचालित कर रहे हैं और इस बार यहाँ पर खेल की शुरुआत तेलंगाना की टीम 0 के मुकाबले 2 गोल से आगे चल रही है। हिमाचल को यहाँ पर 2 गोल की जरूरत है बराबरी बनाने के लिए। हिमाचल के खिलाड़ी के पास बॉल यहाँ पर और लेकर आगे बढ़ते हुए स्टैकिंग सर्किल के ऊपर खेल चल रहा है। यहाँ पर तेलंगाना के स्टैकिंग सर्किल के ऊपर, लेकिन बहुत बुद्धिमान के साथ यहाँ पर तेलंगाना के खिलाड़ी ने बॉल को क्लियर कर दिया। स्थिति अभी भी जश की तस है। तेलंगाना बढ़त बना के रखने के लिए बिल्कुल बेकाब नजर आ रही है, लेकिन जहां तक सवाल है हिमाचल का, हिमाचल को अपनी खेल की नियति को बदलनी पड़ेगी, फॉर्मेट बदलना पड़ेगा, दाबड़तोड़ हमला करना पड़ेगा हिमाचल को, तभी बात बन सकती है। हिमाचल के खिलाड़ी के पास बॉल फिलहाल लेफ्ट फ्लैंक से इस वक्त अटैक करती हुई यहाँ पर बहुत तेज गति से निकल रहे हैं हिमाचल के खिलाड़ी। गेंद गई बाहर। स्थिति 0 के मुकाबले 2 गोल की बढ़त अभी भी यहाँ पर बरकरार है। यहाँ पर तेलंगाना के खिलाड़ी के पास, तेलंगाना बहुत तेज हॉकी खेल रही है और लगभग इस खेल में यहाँ पर अपनी पकड़ बनाए हुए है तेलंगाना के खिलाड़ी। और यहाँ पेनाल्टी कॉर्नर का इशारा, एक मौके को तलाश रही थी यहाँ पर तेलंगाना की टीम और उसने सफलता भी अर्जित कर लिया है। देखिए दीपले में किस तरह से अमित दयाल बॉल लेके निकल रहे थे। अमित दयाल जैसे नंबर 10, बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन इन्होंने किया अमित दयाल ने, बाधा पहुंचाई गई और ये पेनाल्टी कॉर्नर तीसरा क्वार्टर में यहाँ पर तेलंगाना ने पहला पेनाल्टी कॉर्नर अर्जित कर लिया है। फर्स्ट पेनाल्टी कॉर्नर इन द थर्ड क्वार्टर जेट किया गया, रोका गया और यहाँ बढ़ा दिया गया है। मौके को निकाल रही है, अच्छा मौका है अभी भी, लेकिन पेनाल्टी स्टॉप दिया गया। लेकिन निर्णायक का इशारा, संकेत, लेकिन फिर निर्णय क्या होता है। और यहाँ इस पेनाल्टी स्टॉप के निर्णय को बदला गया। तो फिलहाल यहाँ पर 2-0 की स्थिति, तेलंगाना 2 हिमाचल प्रदेश 0। एक बार फिर तेलंगाना बॉल लेके निकलते हुए साथी खिलाड़ी को बढ़ा दिया, अच्छा पास, लेफ्ट फ्लैंक से अटैक करने के लिए जा रही है तेलंगाना की टीम। 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का आज मुकाबले का तीसरा दिन और मुकाबला नंबर 16 मैच, 16वां मैच चल रहा है यहाँ। ये पहले 15 मुकाबले हो चुके हैं, 16वां मुकाबला आज शेड्यूल में मात्र 2 मैच मुकाबला है। पहला मुकाबला इससे पहले संपन्न हुआ गोवा और बंगाल के बीच, जिसमें बंगाल ने गोवा को 2 के मुकाबले 4 गोलों से पराजित किया। आज का आखिरी मुकाबला चल रहा है यहाँ पर और आखिरी मुकाबले का तीसरा क्वार्टर। हिमाचल के खिलाड़ी के पास बॉल, बहुत तेज गति से बॉल लेके निकलते हुए यहाँ पर 23 मीटर के रेखे के पास लंबा हिट, एक मौका यहाँ पर अभी भी हिमाचल के लिए बहुत सुंदर मौका, गोल डाला, बहुत ही खूबसूरत गोल। कहा जाता है कि इरादे हो जवान जिनके वही बाजी पलटते। ठीक है, किस तरह से बॉल लेके निकले, गोलकीपर को चकमा दिया और गेंद गई गोल पोस्ट के अंदर। बहुत साहसिक कदम, ये बहुत कम उम्र का लड़का, देखिए किस तरह से बिल्कुल जुझारू तरीके से बॉल लेके निकला और गेंद गोल पोस्ट में डाला गया। 2-1 की स्थिति है यहाँ पर, खेल कुछ समय के लिए रुका हुआ है। बहुत लेकिन जुझारूपन से उस बच्चे ने, इस सब जूनियर लड़का हिमाचल का, बॉल लेके निकला था।
उमेश भिन्ने और परीक्षित शिवाच 2 अंपायर हैं आज के इस मुकाबले को संचालित कर रहे हैं। 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का आज तीसरा दिन और तीसरे दिन का दूसरा मुकाबला नंबर 16, 16वां मुकाबला पूरी प्रतियोगिता का चल रहा है यहाँ पर चेन्नई के मेयर राधा कृष्ण स्टेडियम। बहुत तेज हॉकी लेकिन चला यहाँ पर अभी तक। सामने आप देख सकते हैं हॉकी इंडिया लीग में जो टीम खेलती है तो बैनर लगे हुए हैं शूरमा, दिल्ली एससी पेपर्स, तो बैनर सामने नजर आ रहा है। वीडियो अंपायर से इस वक्त वार्तालाप हो रही है फील्ड अंपायर का। खुला मौसम है आज यहाँ चेन्नई में। अभी आज मौसम खुला है, हालांकि तापमान 26 डिग्री इस वक्त है चेन्नई का स्टेडियम का। मैक्सिमम 36 डिग्री जा सकता है टेम्परेचर। ह्यूमिडिटी जो है आर्द्रता है 95%, 5% वर्षा होने की संभावना है, बारिश होने की संभावना है। इसका मतलब बारिश की ऐसी कोई इम्कान नहीं है, ऐसी कोई संभावना नहीं है बारिश होने की, जबकि 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर हवा चल रही है। ये है आज का मौजूदा मौसम का हाल चेन्नई का। फिलहाल आकाश खुला हुआ है, आसमान साफ है और एक सुखद मौसम का एहसास करा रहा है चेन्नई का मेयर राधा कृष्ण स्टेडियम। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है ये चेन्नई का। क्या डिसीजन होता है। काफी लंबे अंतराल के बाद देखिए क्या आता है डिसीजन। मैं बता दूं 28 जुलाई से मैं यहाँ पर खेल शुरू हुआ। मुकाबले का है तीसरा दिन। 8 अगस्त तक मुकाबला चलेगा। 8 अगस्त को यहाँ फाइनल मुकाबला हो जाएगा और तीसरे पोजीशन के लिए भी मुकाबला होगा। 8 अगस्त को फाइनल होगा इसी मैदान के ऊपर, इसी स्टेडियम में। काफ़ी लंबा समय लिया जा रहा है इस डिसीजन को लेने में, क्योंकि गोल था, गोल का डिसीजन का पुनरीक्षण किया जा रहा है। हॉकी जो हमारे देश का राष्ट्रीय खेल, और एक समय था जब हॉकी में भारतीय तिरंगा सबसे ऊंचाई पे लहराया करता था।
बात करते हैं अगर 1926, 1928, 1932 उस दशक की अगर हम बात करें जहां पर भारतीय हॉकी टीम की तरफ से हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद खेला करते थे। अगर हम रिकॉर्ड उठा के देखें ओलंपिक का, तो भारत ने अभी तक 8 ओलंपिक में सोना जीता है, जबकि 12 बार ओलंपिक फाइनल में प्रवेश किया है भारतीय हॉकी टीम ने। ये सुनहरा रिकॉर्ड बतलाता है कि किस तरह से पूरी दुनिया में भारतीय हॉकी की धूम थी। सारी दुनिया उस वक्त लोहा मानती थी भारतीय। वर्षों से भारतीय हॉकी टीम पिछड़ गई, लेकिन सबसे सुखद खबर है कि विगत दो ओलंपिक में हम ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आए। ये भारतीय हॉकी के लिए अच्छी खबर है। लगातार भारतीय हॉकी टीम का स्तर आगे बढ़ रहा है। यूं कहा जाए भारतीय हॉकी की कदम आगे बढ़ रहे हैं गोल्ड की तरफ। इस वक्त कदम बढ़ा रही है भारतीय पुरुष हॉकी। वह दूर नहीं है जब भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक में गोल्ड जीते, क्योंकि निरंतर भारतीय हॉकी टीम का ओलंपिक में सुधार हो रहा है। और ये गोल का इशारा बहुत लंबा समय खींचा गया और अंततः गोल हुआ। अब स्थिति 2-1। तो इरादे हों जवां जिनके वही बाजी पलटते हैं। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ी ने, खासकर युवा खिलाड़ी जो बहुत कम उम्र का लग रहा था, उन्होंने अपने इरादे को दिखलाया और एक गोल स्कोर किया गया हिमाचल की तरफ। वक्त की नजाकत के साथ हिमाचल को चलना पड़ेगा। हिमाचल जरूर बर्फों से ढका हुआ प्रदेश है, कूल बैंड से इनके बच्चे खेल भी रहे हैं और इसी का नतीजा है कि बिना दबाव का ये खेल रही है टीम, हिमाचल की टीम, और एक गोल स्कोर कर गई। अब स्थिति 2-1, तेलंगाना 2 हिमाचल 1। चलिए चलते हैं फिर खेल के मैदान में। यहाँ पर हिमाचल के खिलाड़ी के पास बॉल, एक खिलाड़ी को ड्रिल करते हुए दूसरे खिलाड़ी को ड्रिल करके बॉल को निकाल दिया है। बहुत सुरक्षित तरीके से पास बढ़ा दिया अपने साथी खिलाड़ी को। मदरेक के बाद बाएं फ्रेम में अच्छा पास, नबातुल्ला पास, काउंटर अटैक इस वक्त हिमाचल की तरफ से। यहाँ इंक्रीमेंट हुआ, गेंद पैर से टकराई, कैरेट हुआ, फ्री हिट मिलता हुआ हिमाचल को। हिट देने के यहाँ पर संकेत। खिलाड़ी के पास बॉल, साथी खिलाड़ी की तलाश, जैसे नंबर 2 साथी खिलाड़ी के लिए, लेकिन गेंद चली इस वक्त तेलंगाना के खिलाड़ी के पास। तेलंगाना खिलाड़ी मदरेका को क्रॉस करते हुए बहुत तेज गति से इस वक्त तेलंगाना की टीम आगे बढ़ रही है। बॉल को बढ़ा दिया है, समांतर पास राइट फ्लैंक में। इस वक्त कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद गई बहुत तेज गति से फ्लैंक के बाहर। फ्री हिट मिलेगा मदरेका से बाएं फ्लैंक से। इस वक्त यहाँ पर हिमाचल को नीचे उड़ती हुई गेंद, डॉक्टर लाने के पास खेल होता हुआ तेलंगाना के ऊपर एक हमला करने की कोशिश, लेकिन बहुत अच्छा इंटरसेप्ट यहाँ पर तेलंगाना के खिलाड़ी बॉल को कब्जे में कर लिया है। बंद रेखा से क्रॉस करते हुए लेफ्ट साइड से अटैक करती हुई तेलंगाना की टीम बहुत तेज गति का इस्तेमाल और पहुंच गई इस वक्त यहाँ पर स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर। खतरा बन सकता है यहाँ पर हिमाचल के ऊपर, और ये खतरा चला बहुत बिजली की गति से यहाँ पर तेलंगाना के खिलाड़ी बॉल लेके निकले। और खास करके तारीफ करनी पड़ेगी अमित दयाल का, जिन्होंने गोल किया था तेलंगाना की तरफ से। बहुत तेज गति से बॉल लेके निकलते हैं। देखिए अमित दयाल किस तरह से बॉल लेके निकल रहे हैं। आप धीमी गति में देखिए इस स्थान से कहां तक पहुंच गए स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर। ये तो गनीमत समझिए कि वहां पे गलत निशाना साध गए अमित दयाल। ये तीसरा गोल होता तेलंगाना की तरफ से। अब काउंटर अटैक हिमाचल की तरफ से, बहुत ही अच्छा इंटरसेप्ट, बहुत अनुमान के साथ चौकन्ने थे तेलंगाना के खिलाड़ी। अच्छा पंच के खिलाड़ी बॉल को निकाल दिया, राइट फ्लैंक में पास, और अब दाएं फ्लैंक से बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए तेलंगाना खिलाड़ी बॉल को सेंटर किया है। वहां पर बहुत अच्छा पास बढ़ा दिया था, उनके साथी खिलाड़ी बॉल को ले नहीं पाए। अच्छा एक खतरा बनता यहाँ पर हिमाचल के ऊपर।
तो हिमाचल 1 तेलंगाना 2। तीसरा क्वार्टर का खेल चल रहा है, लगभग आधे समय का खेल हो चुका है तीसरा क्वार्टर का। स्थिति बिल्कुल इस वक्त थोड़ी पीछे है यहाँ पर हिमाचल से। तेलंगाना 1 गोल की बढ़त लिए हुए हुआ। हिमाचल के खिलाड़ी के पास बॉल, में बॉल लेके निकलने की कोशिश, बहुत तेजी के साथ वहाँ बॉल निकालने की कोशिश, लेकिन गेंद फिर चलाई तेलंगाना के खिलाड़ी के पास। अपने क्षेत्र से खेलती हुई तेलंगाना की टीम बॉल भी 2 खिलाड़ी को ड्रिबल करके निकालने की कोशिश, लेकिन वहाँ उलझ गए। सफलता मिली हिमाचल के खिलाड़ी को। राइट साइड में बॉल को बढ़ा दिया है, से बॉल लेके निकलने की कोशिश। स्ट्राइकिंग सर्किल के ऊपर खेल होता हुआ यहाँ पर तेलंगाना के स्ट्राइकिंग सर्किल के ऊपर, लेकिन गलत पास दे बैठे। बहुत चतुराई के साथ बॉल को कब्जे में किया है तेलंगाना के खिलाड़ी ने अपने क्षेत्र में। 1-2 की स्थिति, हिमाचल 1 तेलंगाना 2। 7 मिनट 35 सेकंड का समय बचा हुआ है यहाँ पर तीसरा क्वार्टर का। बाहर स्वागत है आपका हॉकी इंडिया के मीडिया यूट्यूब चैनल पर, जहां पे आप इस चैनल के माध्यम से मुकाबले का सीधा प्रसारण देख रहे हैं, जो हमारे प्रोडक्शन टीम के द्वारा कवरेज किया जा रहा है चेन्नई के मेयर राधा कृष्ण स्टेडियम से। और मैं शमीम आलम अपने साथी कमेंटेटर मयूर बरुआ के साथ आपको यहाँ की पल पल की जानकारी आप तक पहुँचा रहा हूँ। इस मैदान के ऊपर घटने वाले सारे घटनाक्रम पर आप तक स्थिति, ताज़ा स्थिति आप तक हालात से आपको आगाह किया जा रहा है। तो यहाँ पर उठाइए अपना स्मार्टफोन और हॉकी इंडिया मीडिया यूट्यूब चैनल पे जाइए और देखिए आज क्या यहाँ पर स्थिति बढ़ रही है। आज के दूसरे मुकाबले में हिमाचल 1 है, तेलंगाना 2 है। आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी छोर में रह के घर बैठे मुकाबले का सीधा प्रसारण का आंखों देखा विवरण सुन सकते हैं। तकनीक इतनी आगे है। आज गलत पास बैठे हैं हिमाचल के खिलाड़ी के पास बॉल, तो डी के अंदर स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर पहुंचते हुए हिमाचल के खिलाड़ी, एक मौका हिमाचल के लिए बराबरी पर आने का। बहुत अच्छे मौके को तलाश रही है, लेकिन तेलंगाना के खिलाड़ी वहां पे मौजूद थे। गलत पास दे बैठे। एक बार फिर गेंद हिमाचल के खिलाड़ी के पास, डॉक्टर लेने के पास के ऊपर से 1 मिनट तक हिमाचल को। हिमाचल 1 तेलंगाना 2। 5 मिनट 38 सेकंड का समय बचा हुआ है। ये स्थिति, ये समय यहाँ पर कुछ कर गुजरने का है हिमाचल के लिए, क्योंकि हिमाचल 1 गोल से पिछड़ रही है। हिमाचल की टीम बराबरी पर आ जाती है तो फिर तेलंगाना के लिए सोचनीय स्थिति होगी। लगातार यहाँ पर हिमाचल की टीम भी अटैक कर रही है। बहुत दूर से यहाँ पर हिट किया हिमाचल के खिलाड़ी ने, लेकिन गेंद बाहर। हिमाचल 1 तेलंगाना 2। रिप्ले में देखिए किस तरह से कोशिश की गई थी जरूर, ये देखिए हिमाचल के खिलाड़ी ने, लेकिन निशाना गलत साधा, गेंद बाहर चली गई गोल पोस्ट का। तो 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय पुरुष चैंपियनशिप 2025 का मुकाबला यहाँ पर चल रहा है चेन्नई के मेयर राधा कृष्ण स्टेडियम में। तीसरा क्वार्टर का खेल चल रहा है। वक्त की रफ्तार बहुत तेजी के साथ निकल रहा है यहाँ पर। अच्छा मौका है यहाँ पर, अभी भी है मौका। तेलंगाना के लिए मौका निकाला था उनके खिलाड़ियों ने, लेकिन बता दूं टीमें अपना पहला मुकाबला हार चुकी है। तेलंगाना को मणिपुर ने 1 के मुकाबले 4 गोल से किया। हिमाचल को केरला ने 1 के मुकाबले 6 गोल से पराजित किया। मौका यहाँ पर, लेकिन निकाल दिया बहुत चतुराई के साथ हिमाचल के खिलाड़ी ने। स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर गेंद घूम रही थी, तेलंगाना के खिलाड़ी से पहले ही चतुराई के साथ बॉल को निकाल दिया। हिमाचल के खिलाड़ी के पास बॉल। 1-2 की स्थिति, लगभग 4 मिनट का समय बाकी है, जबकि यहाँ पर
फील्ड अंपायर ने मदद मांगी है वीडियो अंपायर से। हिमाचल 1 तेलंगाना 2, 2-1 की स्थिति है इस वक्त। एक गोल की जरूरत है यहाँ पर हिमाचल को, सख्त जरूरत है बराबरी बनाने के लिए। अगर अपनी दमखम को कायम रखते हैं हिमाचल के खिलाड़ी। अभी भी एक क्वार्टर का खेल बाकी है और लगभग 4 मिनट का समय बाकी है। इस समय हॉकी के लिए अगर कहा जाए तो काफ़ी समय होता है, क्योंकि हॉकी में इतना तेज खेल है, यहाँ मिनट नहीं बल्कि सेकंड में परिणाम बदल जाता है। तेलंगाना के खिलाड़ी के पास बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए बहुत तेज गति से इस वक्त अमित दयाल बॉल लेकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन बहुत अच्छा टेकलमेंट वहीं पर हिमाचल के खिलाड़ी का। अमित दयाल से तो सावधान रहनी पड़ेगी। जर्सी नंबर 10 अमित दयाल बहुत तेज गति से बॉल लेके निकलते हैं। तेलंगाना के हैं आज निश्चित रूप से बहुत बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया है अमित दयाल ने अपनी टीम की तरफ से। तो मौका है हिमाचल के लिए, डी के ऊपर खेल चलता हुआ। कोशिश टकराई गेंद पर कैरेड हुआ, फ्री हिट मिलता हुआ तेलंगाना को अपने क्षेत्र से। स्ट्राइकिंग सर्किल से फ्री हिट मिलता हुआ, स्कूप किया ऊंची उड़ती हुई गेंद। लगभग 2.5 मिनट का समय बाकी है, जबकि परिस्थिति बिल्कुल इस वक्त तेलंगाना के पक्ष में है। हिमाचल 1 गोल से पीछे चल रही है, 1 के मुकाबले 2 गोल से इस वक्त आगे, यानी 1 गोल की बढ़त है यहाँ पर तेलंगाना के पास। हिमाचल का अटैक बनता हुआ, डाइफ्रेंस से इस बात डी के अंदर पहुंचने की कोशिश कर रही है हिमाचल की टीम। बहुत दूर से हिट, लेकिन दूर निकल गई गेंद, गोल पोस्ट से बाहर निकल गई। स्थिति हिमाचल 1 तेलंगाना 2। शाम का सत्र का दूसरा मुकाबला हो रहा है। आज पहला मुकाबला हुआ था बंगाल और गोवा के बीच, जिसमें बंगाल ने गोवा को 2 के मुकाबले 4 गोलों से पराजित करके अपनी स्थिति अपने ग्रुप में, डिवीजन बी का ग्रुप में मजबूत कर लिया है। जबकि यहाँ पर पूल ए में बंगाल की टीम ने अपनी स्थिति को काफ़ी मजबूत कर लिया है 2 मुकाबलों को जीत करके। जबकि पूल बी का ये मुकाबला चल रहा है हिमाचल और तेलंगाना के बीच। हालांकि दोनों टीमें अपना पहला प्रारंभिक मुकाबले को हार चुकी है। जैसा मैं बता रहा था कि तेलंगाना को मणिपुर ने हराया था 1 के मुकाबले 7 गोल से, जबकि हिमाचल को केरला ने हराया 1 के मुकाबले 6 गोलों से। लेकिन इस वक्त यहाँ पर तेलंगाना की टीम दूसरे मुकाबले में जीत की ओर अग्रसर है, या यूं कहा जाए जीत की देवी दरवाजे के ऊपर दस्तक देती हुई। लेकिन 1 क्वार्टर का खेल बाकी है। इस वक्त को भी याद रखना पड़ेगा यहाँ पर हिमाचल को और तेलंगाना को खास करके यह रखना पड़ेगा, क्योंकि हिमाचल की टीम किसी भी समय वापसी कर सकती है। इस तरह से हिमाचल की टीम खेल रही है, एक समय के कालांतर में बहुत अच्छा हमला कर रही है हिमाचल की टीम। ये अलग बात है कि दूसरा गोल अभी तक नहीं कर पाई है हिमाचल की टीम, लेकिन टाइम टू टाइम अटैक जरूर कर रही है। हिमाचल के भी बच्चे अच्छा खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने दमखम को लगा के रखा है यहाँ पर हिमाचल के खिलाड़ी। सफलता निश्चित रूप से उसे ही मिलती है, उस टीम को ही मिलेगी जो अंतिम समय तक अपने दमखम को बनाए रखेगी, क्योंकि हॉकी बहुत तेज खेल होता है। यहाँ मिनट नहीं सेकंड में परिणाम बदल जाते हैं और यहाँ पर हुटर बजता हुआ इस बात का संकेत कि यहाँ पर तीसरा क्वार्टर का खेल
खत्म हुआ, बाजी मार रखी है अभी तक तेलंगाना की टीम ने। हिमाचल प्रदेश के मुकाबले एक गोल के मुकाबले 2 गोल से आगे है, यानी 1 गोल की बढ़त अभी तक बरकरार है तेलंगाना के पास। हिमाचल को बराबरी पर आने के लिए 1 गोल की जरूरत है। समय बचा है सिर्फ मात्र 15 मिनट का समय बचा है, चौथा क्वार्टर का समय बचा है। लेकिन चौथा क्वार्टर में यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की टीम क्या वापसी कर पाएगी या फिर तेलंगाना की टीम स्कोरिंग के ग्राफ को बढ़ाएगी, क्या खेल की नीति रहेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। भविष्य फिलहाल जो है वो गर्भ में छिपा हुआ है। यहाँ पर कौन सी टीम बाजी मार जाएगी अभी तक कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल तेलंगाना का पलड़ा जरूर भारी है। चौथे क्वार्टर में क्या होता है, क्या स्थिति बनती है, इसको बताने के लिए चलिए मैं आपको लिए चलता हूं अपने साथी कमेंटेटर इंग्लिश में विवरण देने के लिए मयूर बारुआ के पास। नाउ ओवर टू मयूर बारुआ। Good afternoon, everyone, and welcome back to the fourth and the last quarter, and also the last quarter of the day, because there are just 2 matches today. At the moment, Telangana hockey still climbing at the top with 2 goals to versus 1 for Hockey Himachal Pradesh. Behind the mic, I am Mayur Barwa, and thank you so much, Mr. Shami Malam. And it's been always wonderful hearing the running Hindi commentary and from the lips of Mr. Alam. As I mentioned before, huge experience under his belt, or Mr. Shami Malam. Very grateful in hockey, very grateful in football. At the moment, it's Himachal Pradesh from the left flank, trying, but 5 of the defenses crawling past him, and the umpire says it's a penalty corner. We have just started, and it's for Himachal Pradesh to get it done and dusted. 2 of them called for a foul, and the umpire acknowledged immediately, signaling a penalty corner. It's for the Pink Army of Hockey Himachal Pradesh to try and equalize the score to 2-2. Can they do it? I'm sure it's a cold feet moment for Telangana. Blow the whistle, comes in, insertion has been done. Can they flick it fine? Tackles of the stick, and it has been swayed away from the danger area. So a chance has definitely gone by. It's a good pass. Oh, it can be an important pass also. How heavenly they have just missed it. Could have been 3 for Telangana. So unfortunate. So close it was. And you can see, oh my goodness, this could have been one of the easiest in his lifeline. But focus back on Hockey Himachal Pradesh. Very quickly, this game is tilting in within 90 seconds and not even triple figures of the seconds clock time. This match is, this fourth quarter, especially now for Hockey Himachal Pradesh, is all to play for. Just 1 goal ahead is Telangana Hockey, so they cannot lie very smoothly. They cannot go cool as a cucumber. They need to play their own strategies. They need to play the best. Still trying. He's curving it through the defenses. Pink Army. Oh, right to the corner. How well it was being tried, like a jigsaw. Pedal, left, right, and straight. He just had to put it some confusion. I mean, Telangana Hockey, and he could have easily drafted it. But again, easier said than done. Wrong pass gets into the stick of Telangana Hockey. What a chance being created. Within this 100 seconds, we have seen some fabulous crackdown, fabulous sticks in place.
especially it has been started from Hockey Himachal Pradesh. It's still there inside the striking circle. A wrong pass, scooped up little shorter. The stick from Telangana Hockey gets it down almost to the half of the half line. Some warning signals come in. Hockey Himachal, they want to go upstairs. They want to take the help of the technology for some kind of infringement. It will be for the TV umpire to try and adjudicate if Hockey Himachal Pradesh retains the review or they lose it. Not very. I couldn't say what exactly was they appealing for, but we have certainly gone upstairs to take the assistance of the technology, the TV umpire. But this is match number 16 of the 15th edition of the Hockey India Sub-Junior Man National Championship. We played here in this beautiful city of South India, here in Chennai, in Tamil Nadu. Good afternoon shadows passing through this venue. We had some handful of crowd coming in. I could see it's a place where you can hear the horn that's of the train, because the train lines, as I've mentioned, the track lines passes through all the important areas. The cricket stadium is also probably not very far away. The Chinnaswamy Stadium had a huge crowd pull up for these games here in Chennai. So what a wonderful city. And let me tell you, for the listeners, Chennai is where our co-commentator Arbaz Khan stays. He's from Chennai, so it's a good one for him. He can come to the ground, do it. At the moment, we are all doing it online. We are just loving it. This is this quadrants of me, Mayur Parwa, Arbaz Khan, Mr. Shamim Alam, and Mr. Vikas Kumar. The moment just trying to get some signal coming in from the TV umpire. It's 12 and a half minutes passes by in this fourth quarter. 12 minutes remaining on the clock. Hockey Himachal Pradesh, this is going to be a very important quarter for them. On the back of a loss for both the teams. Remember, Himachal losing to Kerala Hockey 1-6. And Telangana Hockey losing the last match 1-7 versus Manipur Hockey. So all to play for. But Bengal Hockey, or should I say Hockey Bengal, back-to-back wins for them. Because they won 2-0 Hockey versus Hockey Arunachal. Then winning 4-2 today versus the GOANS Hockey. So back-to-back defeats for GOANS Hockey, for the boys in green. 0-4 versus Chhattisgarh Hockey. And then 2-4 today versus Hockey Bengal. So really they need to push up their game, need to come up 1 point up and try and see what mistakes they have done. And sometimes it's so easy for the eye to crop in to say these are the mistakes, but on the gameplay it's never easy to find out. So this is something very important. Really nice. Let's see what is coming up. This is really wonderful. Really wonderful to see of what it will come up. We also have 2 more tournaments coming in. Kakinada in Andhra Pradesh will be starting from day after tomorrow, 1st of August, till the 12th of August. Then we are having championship will be played in Ludhiana from the 12th of August till the 24th of August. So huge amounts of hockey lined up for you to stick by with us and enjoy the game of hockey. I'm sure it is never easy to anyone to say that hockey might be your lifeline, but again, in so many tournaments, sometimes it's overlapped with you, and sometimes you just lose the track. But don't worry, we're Hockey India. We have the app, everything for call you for on the go. You can follow up, and so all those on the at the palm of your hand, isn't it? To
Sports Video website to try and learn what's happened, what's coming in the corner. We're still waiting for a decision to come in from the TV umpires, probably trying to see what the clauses of the infringement happened there. Remember, it's an appeal from Hockey Himachal Pradesh versus Telangana, and they will do everything. They're just one goal behind at the moment. I can say just, but to score even a single goal, it takes so much of sweat energy from you. It suck it up so much as you soak in the atmosphere, because this is not a normal tournament. It's the national championship of this Division B, this 15th edition of the Hockey India Sub Junior Man National Championship. And you are probably getting some decision coming in as the umpires finally make some movement with the collar holding up, the mic holding up to his mouthpiece. Let's see what comes in from there. He's trying to just get it, I'm sure, trying to just learn what it is. It's all done and dusted very quickly. Sometimes have to wait for a long time. Let's see. The focus is all up there, and so all getting regrouped. Nothing much. You have to break up the bondage. It'll be almost like a freebie. So all going all up, and so it has not actually worked in favor of Hockey Himachal Pradesh. The scoreline remains at 1-2 as the game begins from just few seconds over 12 minutes. Hugely now, both the teams, even if Hockey Telangana is leading by 1 goal, they cannot and will not for sure let it easily by these sub-junior boys. So a great bit of statistics which also comes up. We are yet to play Group Division A. Remember, we are playing Division B at the moment. We have also played Division C. Just 3 matches remaining in Division C. Probably from tomorrow onwards, we're playing Division A matches. There are hosts of matches to be played. This is day 3. We are finishing on 8th of August. This tournament here in Chennai. It's a lovely pass, but again onto the wrong angle. It's a cry for a foul play from Hockey Telangana. The bondage been broken from the umpire. 5-1 for Hockey Gujarat versus Hockey Arunachal in Division B. Chhattisgarh Hockey 4-0 versus GOANS Hockey. 6-0 for Kerala Hockey versus Hockey Andhra Pradesh. Right to the corner, Telangana. But Manipur Hockey has been stupendous. 7-1 versus Telangana Hockey. Just at a base. And then 10-1 for Manipur Hockey versus Hockey Andhra Pradesh. A huge team, but their own state from Mizoram have not been playing the best of the hockey. The Telangana Hockey has a chance here, almost inside the striking circle. Have to go past the defenses, not 1, not 2, not 3, not 4, but 5 of them have to crack by. Oh, now someone has to go and sit down. Someone has to go and sit down for some time. Because didn't the umpire just signal a green card? I think one of the players will just go by. There you go. First quarter, there were 2 players who sat by, and now there you go. 2 of them have to go, and now 1 from Telangana have to go and sit by. Can they relax? Now playing by 10 players, 9 on field, 1 goalkeeper. That's what happens when the tempers flare up, when a heat rises, and then you want to see the brilliance of the best of the footing coming up. But there you have the match officials as experienced as ever to hawking to what you're doing. To play by the rules of the book, unfortunately, you cannot just go in and play limitless, isn't it? So which might just be very dreadful, and that's the reason why we have the best of the officials officiating, trying to make a smooth functioning of this tournament. I'm sure everyone is really very happy with the kind of with the trend of hockey which is not only going on, but including match officials who have done such a fabulous job. It's just day number 3. We still have 9 days to go in this championship.
mentioned before, new tournaments will be coming up from tomorrow, including Kakinada in Andhra Pradesh. It will be such a brilliant branding of hockey which will be going on. At the moment, you are here in Chennai, in the South Indian city, the capital. We are in Tamil Nadu. What a city! Lovely people, but we have our very own Arvaz Khan to tell the story of how hot and humid the city is, but never lacking in front of in terms of sports, loving every bit of it. At the moment, Hockey Himachal Pradesh was trying to get that one goal which will square up the things and put the pressure back on Telangana Hockey, who are leading by one goal. Just a single figure now on the clock. Less than 10 minutes to go by for the blow of the final whistle to signal the end of the match. Telangana Hockey go very up, almost inside the striking circle. Yes, two of the defenses to break by. Again, putting a reverse pass. Then he did it, almost like a 180-degree circulation for the player from Telangana. It was Rakesh Kuncham, the captain, along with Lawrence Hadrian from Telangana Hockey. It's a scoop, it's a wrong scoop. And gets passed on to Amit Dayal. Forwards right from the left lane, but this was brilliant. Last quarter just had one goal, nothing happening here. Two of them coming in the first, nothing came in the second quarter. This quarter is so important, especially for Hockey Himachal Pradesh. Not to take anything away of how Telangana is also have to be very much accustomed to the very customer. Hockey Himachal Pradesh has a chance. The ball goes out of bounds, unfortunately, as both a player each from both the teams were going right behind the ball. And 8.5 minutes to finish up the day's play. We just have two matches today. First, it was Hockey Bengal defeating GOANS Hockey by 4-2. And now it is such a nice close-up match. It might just be a nail-biting finish. You never know. So almost 8 minutes remaining from here on. This might just be a very close contest. So don't go anywhere. Don't blink an eye. Jersey number 10 there. That's Amit Dayal. He's been very important. We saw how he trickled most of the defenders carrying out the ball through. You can also say some of the players like Lakshya, the captain for Hockey Himachal, with nothing much to show up. Just the goal for Hockey Himachal in the last encounter versus Kerala, and now one versus Telangana. So, but much better difference. It's not only about the difference, but it's also about the hockey. The penalty corner here for Hockey Himachal Pradesh. The music just comes by to tell you that one of the penalty corners has been called for. Now it is for Hockey Himachal Pradesh. The Pink Army from the corner. Get it inserted, get it drafted, and get the points for yourself. They're very close by. The whistle comes in, and it's a scoop. Not much power behind. He wanted to do something out of the blue, not to get along the carpet. Then why not let the ball fly into the air and try and see if he can draft it directly. It's a very good pass, but gets the stick of the opposition. And it's a fly by and a green card. He says you have to be on your way, sir. That's what's the indication with the face also. First a player from Telangana and now a player from Hockey Himachal Pradesh have to go and sit by in the wings, waiting for a chance to come back again. As I've said, the player comes in. They're still in the sub-junior category, but they'll have to learn the nitty-gritties of the sport, of how much of an elderly people they just played up, how the seniors, how the junior categories they play. Because if you have to go to the next level, this is also very important to play by the laws of the game, of how you cannot make anything sway away from you, because those are brownie points also remaining. Because the spirit of the game, which also you play with any sports,
The spirit of the game needs to be upholded every time. That's why you stick it by. It's inside the striking circle for Hockey Himachal Pradesh, circling. Oh my goodness, penalty corner for Telangana Hockey. Oh my absolute goodness. He's trying to cushion it up with the umpire. Did come almost some inches away from the striking circle. He was all alone. Was trying to break through the defenses. Now it was. I thought it was for Telangana. It's actually for Hockey Himachal Pradesh. Inside the striking circle. Just gives it through. Passing it on. Hockey Himachal Pradesh. You absolute beauty. They did try the scoop few minutes back. They're trying to go upstairs. Has this goal not been given? There's some bit of confusion. I think they're going upstairs, or is it a review being called from Telangana? We're again waiting for decision to come from upstairs. We still have to wait to see if it is for Telangana or will it be for Hockey Himachal Pradesh, coming so far up, just waiting at 4.5 minutes. It's like waiting forever. So if it's for Hockey Himachal Pradesh, then it will be 2-2. Then it will be such an interesting gameplay. Telangana Hockey will only have themselves to blame, from 1-0 to 2-0 and then 2-1, and now losing the plot altogether to make it 2-2. Is only themselves to be blamed of how they've let this match slip by. So this signal of what transpires from above will be a very, very good one to see for it. It won't be easy. Almost like a very close by. Let's see what it comes when not grabbed in Team 𝐶𝐽. Let's see what is going to just be coming for. It will always be up for them. Just get it going. So the goal has actually not been given to Hockey Himachal Pradesh. So we'll have to stick by, short by. So unfortunate, hugely unfortunate for Hockey Himachal Pradesh. Have to play by the rules. They cannot be spending it all up. Probably a few minutes to go by. That's when the player having been asked to go back. But Telangana marching very hard across. Straight up to make a counter attack is Hockey Himachal Pradesh. The sounds of the sticks getting entangled will be higher and higher as more and more action comes as close as possible. Hockey Himachal Pradesh with that goal, they were so happy how quickly it has just evaporated as we went upstairs. Terrific. That was a call probably from Telangana Hockey to get the scoreline at the original place of 1-2. And it's going by. Just little few seconds over the 3 minutes remaining here. And Hockey Himachal Pradesh Hockey really needs that. Probably can they pace it up 5? Can they pace and have that dial? Can they break it? You can see 3 of them just bringing it really, really so well.
Just cross over with the ball. How many players do you see one by one? Sometimes it just keeps on going. I think this was a form of a substitute at the moment. So 2.5 minutes of the gameplay. Remaining here. Very good going and knowing for them. Let's see what it says, what we probably have in store. It's a 5 for 5. And 1 for Hockey Himachal Pradesh, 2 for Telangana. Good gameplay. Nicely poised, probably for a goal to come in for Hockey Himachal Pradesh. If one comes in, it is such a goal shredder under your feet for Telangana Hockey. 2 minutes now from here on. They know they'll have to score it very fast now. Cannot let the points go up. It's all about the timing. Remember, this is the last quarter. If Pradesh loses, it will be back-to-back loss for them. 9-6 versus Kerala Hockey. And now trailing by 1 goal. But this match has been much better. Versus Kerala, Chhattisgarh, Manipur, they are very tough. And now Hockey Bengal has also proved to be a huge thorn in the flesh. Because they won versus Hockey Arunachal and 10 today versus GOANS Hockey. So you can definitely feel the cream or the best of the business just be on the top of the game. Just the seconds now remaining on the clock. It, as of now, looks it will be signaled very much in the favor of Telangana Hockey. By the looks of it, last quarter going on. Seconds just flying by so quickly. Himachal Pradesh, when they come back, they really need to see how they have been favoring. What was the difference they did? What was versus Kerala Hockey or versus Telangana? If there was any difference, but the difference can be melted out for the next time because the hooter has been played and it's the final time, which is finished by the management is very happy. But the final time, the full time, it will say 1 for Hockey Himachal and 2 for Telangana Hockey. So match number 16 comes to an end of this 15 Hockey India Sub-Junior Man National Championship 2025 from this beautiful city of Chennai in Tamil Nadu. Behind the mic, I am Mayur Parwa. I'll be giving a grateful sign-off along with the commentary panel here of Mr. Shami Malam, Mr. Vikas Kumar and Arvaz Khan. As you enjoy these highlights and come back for all the action tomorrow. Have a great evening ahead and take care of yourself. सीना चौड़ा किया है तूने अपनी मेहनत कौशल से, रण विजयी होना है तुमको निश्चय और मनोबल से। युगों युगों तक आगे ही इतिहास रचाया जाएगा, 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 जाएगा। हॉकी की रणभूमि पे तिरंगा ही लहराएगा। तिरंगा
फिर गूंज उठा है शंखनाद पारा है लक्ष्य को निर्विवाद। कभी रुकेगी नहीं कभी बुझेगी नहीं अपनी विजय की जलती मशाल। अब कुछ भी हो कम हो